मास्क हटा दे। Ready, please. Wait. Namaskar. Very good morning to all of you in this session of Curriculum and Pedagogic Reform, School Education in 21st Century with National Education Policy 2020. I welcome respected Secretary Madam, School Education and Literacy, Ministry of Education, Shrimati Anita Karwalji. I also welcome respected Director, NCERT, Professor Rishikesh Senapati Shri Vipin Kumar ji, Ministry of Education, my colleague from NCERT, other officials of Ministry of Education and various autonomous organizations working under Ministry of Education. I welcome our learned speaker. Again, I welcome Professor Rishikesh Senapati. He is one of learned speakers, Director NCERT. I also welcome Mr. S. Rajkumar Pavitra, National Awardee Teacher, Indira Gandhi Government High School, Katteri Kuppam, Puducherry. I welcome Professor Anjum Sibia, Professor in Psychology, uh, uh, working in Department of Educational Research at NCERT. I welcome Dr. K. Devi, working in Department of Curriculum Studies, NCERT. I also welcome Professor Padma Yadav, working in Department of Elementary Education, NCERT. I welcome Mr. Saji Kumar, National Awardee Teacher, 2020, Chennai Thalla, Kerala. So I welcome all these speakers in this session. I welcome all of you, students, teachers, teacher educators, scholars, educationists, subject experts, community members who are associated, who are watching this session, who are now with us in this session of Teacher Fest on curriculum and pedagogic reform. So, first of all, I just
wanted to make a brief presentation on what are the policy recommendations in the area of curriculum and pedagogic reform. It is a very important area and very important aspect of school education. So this session is particularly divided into two parts. First part will be on curriculum reform, and the second part will be on pedagogic reform. In first part, we have two speakers along with me, Professor Rishikesh Anapatiji and Mr. S. Rajkumar. And in the second part, we have four speakers, Professor Anjan Sipia, and Dr. K. Vishridevi, Professor Padma Yadav, and Saji Kumarji. So they will be speaking about pedagogic reform. So to start with the presentation, my first slide speaks of about the focus of so this is what is the focus of national education policy as far as the area of curriculum is concerned, or as far as the whole goal of the policy is concerned. So it is 21st century skills. Yes, policy is focusing on holistic development of students by developing 21st century skills in them and manifestation of knowledge as perfection. Policy is clearly saying that we have to manifest this knowledge, which is a deep-seated treasure within an individual, and we have to take it out with efforts in school education. Policy is also recommending let us move away from rote learning, moving towards real understanding and learning how to learn, and away from the culture of rote learning. The policy is also recommending that we have to develop learners into a good, successful, innovative, adaptable, and productive human being. So these are the focus areas of the policy, which will lead towards the holistic development of our children. Now, how to achieve this goal of holistic development of children? The policy is suggesting some strategies. One of the strategy is reorienting and revamping all aspects of curriculum and pedagogy, which we will be discussing today. It is also saying that we need to identify some set of skills and values across domains for integration and incorporation at each stage of learning, from preschool to higher education. And policy is also recommending that we have to develop national curriculum frameworks as transaction mechanisms so that we can implement the policy perspective in true letter and spirit. The policy is giving us this pedagogic structure reform, and it is saying that we need to now divide our whole education system into four blocks. That is, first is foundational stage, the second is preparatory stage, and the third is middle stage, and the fourth is secondary stage. So these stages will be discussed by our worthy speakers in coming parts. So I'm not going to focus on this thing and detail out this. Then the policy is also recommending that we have to reorient our curriculum if we want to achieve our goal of holistic development, and we have to introduce competency-based education. We have to integrate arts, sports, and ICT across subject areas, across classes. We also have to develop scientific temper among us students. We should not now go by hard separation of subjects. So there is no hard separation of subject. Children will be given more and flexible choices. We have to integrate digital literacy, and we have to initiate bagless days so that our children will get an opportunity to work with local craftsmen and develop dignity of labor in them.
So these are some of the suggestions for reorienting our curriculum in our policy. The policy is further saying that if we want to give more space to sports, arts, ICT, of course we want to then reduce our content load, information load. So policy is also recommending reduction in curriculum, but reduction in curriculum does not mean that we need to reduce our activities which leads to holistic development, but we need to reduce information. We need to increase experiential learning opportunities for our students. So this is our policy recommendation, and that is towards reorienting our curriculum. The policy is very much focusing on experiential learning, and it is saying that rather than giving lectures in the class, we need to take our children to the field, to the actual working situation, and give them that kind of exposure so that through experiential learning they can learn more and more with interest, with curiosity, and also they should learn how to learn. So this is our policy recommendation. Then the policy is coming onto this recommendation, multilingualism and the power of language. The policy is clearly saying that as far as possible, we need to provide primary education in mother tongue so that children can be able to learn more and more, because research studies often say that children learn in their own language more. This is the policy recommendation, and our learned speakers will be talking more about on this aspect. The policy is further saying that we have to introduce knowledge of India across stages. So our children need to understand our culture, our linguistic diversity, our festivals, our food habits. Those kinds of things we need to give from the early stage to our children so that they can develop pride of Indian traditions and practices. So this is our policy recommendation, and it is the policy is recommending these kinds of courses from upper primary onwards to be introduced in this. Then the policy is focusing on developing values and skills. The whole sets of skills and values are given in the policy, and for introducing or for integrating these values, for developing these values and skills, the policy is recommending many literature, many references. It is giving like Panchtantra and many other Indian literature, so that children will take interest in these kinds of stories and acquire those values which policy is concerned about. So the policy is further recommending very important skills, that is computational thinking, coding, mathematical thinking and problem solving, including contemporary subjects in school. The policy is very much concerned about not only linking our children to our cultural roots, but also to make children global citizens. So for making children global citizens, the policy is recommending these kinds of areas we need to focus on. That is, I have already said, computational thinking, mathematical thinking and problem solving, coding. Coding is very important area, and nowadays children are very much interested in that, and including these kinds of contemporary subjects like artificial intelligence, design thinking, holistic health, organic living, environmental education, global citizenship education. These are the policy recommendations. That is why policy is saying that at the secondary stage we need to be very flexible in subject choices. Whatever children like to learn, they should learn with multiple exit and entry system. So that is also this policy is giving opportunities to children to learn more and more. Then we are coming to the development of national curriculum framework and textbook with local content and flavor, because whatever policies recommendations are, these recommendations will be realized through the development of national curriculum frameworks. This time policy is recommending
four national curriculum frameworks. One national curriculum framework is for ECCE, Early Childhood Care and Education. The second one, national curriculum framework for school education, the entire school education. The third one, national curriculum framework for teacher education, and the national curriculum framework for adult education. So one can see the holistic perspective of this national education policy, which is very much concerned about all the areas which can improve quality of education and taking our country to heights. So, while developing national curriculum framework policies, also recommending that when we want to integrate our local culture, local flavor, our textbook need to reflect that. So, though NCERT will prepare model textbooks, core textbooks in the core subject area, but states need to give local flavor in their textbooks, local context in their textbook, so that children can move from local to global. It would be very easy for children, their parents, their children will be aware of their own culture, their own linguistic diversity, their own context, and building upon that, they will further move towards global citizenship. So, policy is recommending these kinds of, and it is also recommending energized textbooks, so that children will be getting more and more opportunity to learn variety of themes within this integrated within this main on core themes in the textbooks. Then the policy is also then coming to assessment and examination reform, because if we want to develop our children holistically, definitely we want to assess them holistically, and our speakers will be talking about that what are the policies concerned on the holistic assessment 360-degree report card, holistic report card, which will cover all the aspects of children as far as assessment is concerned. It is not only the cognitive aspect and not only through paper pencil tests, but of course with different tools we can use to assess our children: observation, rating scales, activity, project. So these and portfolios. So this is, and policy is also recommending a national assessment center for a performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development to be set up to support assessment and examination reform in the country. The policy is then, of course, you all have then this kind of concern that how can we implement this pedagogic and curriculum reform in the system. So we are giving a very brief implementation plan. We need to develop at the NCERT level, when we will be developing national curriculum framework for ECCE and national curriculum framework for school education. Definitely before that, we have to have thorough discussion on various aspects of school education, which is multilingualism, or teaching of science, or teaching of mathematics. So across the areas we have to discuss, we have to come out with some kind of position papers, that what are the status right now and how can we move forward. And then these position papers will be providing inputs for the national curriculum framework for school education, ECC, adult education, as well as teacher education. And then we will be developing syllabus and textbooks based on the perspective of the national curriculum framework. So we will be developing core area textbooks, also model textbooks for other areas, which will be further contextualized by the states and UTs. We will also be developing material for teachers and teacher educators, because it is very much important when we want to transact our syllabus and textbook. Teacher and teacher need capacity building, so that in that area also we have to work together with SCRTs, with states, and then we have to build the capacity of teacher and teacher educators. We have to build the capacity of even textbook writers, and so many handbooks and courses also. When Knowledge of India policy is recommended, we have to come out with different designs of this course, Knowledge of India, for upper primary, for secondary,
and states have to join us contextualizing these courses as per the state perspective. So lots of implementation activities are there, plans are there to implement this policy in true letter and spirit. So now I would conclude my presentation so that we can begin our experts' views, our speakers' views on this curriculum and pedagogic reform. So thank you for patience listening. So now I would like to invite Professor Rushikesh Senapati, Director NCERT. He is a scholar and renowned teacher educator and educationist also. He has worked in the area of teacher education, and now we can say that he has been working in the area of assessment, teacher education, curriculum. So in NCERT and with they are taking this this task of directorship in the NCERT. Now we can see that he is an all-rounder in the area of school education and teacher education. So he has many research publications. He in presently in NCERT he is leading so many projects, so many programs. One is that this thing development of this national curriculum framework. We have been he is our guiding force, and he has been a very strong support for this nishtha which we had initiated, national initiative for school heads and teachers holistic advancement, which is going on in the country. It is aiming at for training of 42 lakh teachers. So he is the guiding force behind that. So I know that you all are knowing him much more than me. So I would now like to invite Professor Rishikesh Senapati to speak about his views on curriculum reform, which policy is emphasizing. Yes. Thank you, Ranjanaji, for your kind word. I'm really very happy to be part of this program. Respected Secretary School Education, Madam Anita Tadwar, Sri Vipin Kumar, Joint Secretary, coordinator of this program, my colleagues, all the speakers. This is a very good opportunity. We are sharing our experiences with you all about this NEP 2020, particularly with reference to curriculum, pedagogy, and assessment. We all know every child is unique, and policy recommends the development of creative potential of every child. This is a big challenge before us. When we say every child is unique and our children are coming from different parts of the country, from tribal area, from rural area, from slum, and they're coming from different cultural background, different linguistic background, and different geographical background. So in this scenario, now we have a big challenge to provide a curriculum which will cater to the need of each and every child, which will really help the holistic development of each and every child of our country. That is the main focus of this policy. And in this process, our children will be connected to their root. We all know we have a very rich cultural heritage, and our children should know our culture. Our children should understand our tradition, our value system, and simultaneously keeping in view the Indian philosophy, Vasudhaiva Kutumbakam, we should help our children to move towards this global civilization. This is a very big challenge before us. How to prepare our children in a holistic way. And the challenge what we are facing now in our school system, our focus is on cognitive development.
Most of the time, we emphasize our children should secure good mark in exam. They should have content mastery. But as per the recommendation of this policy, we have to shift our focus from content mastery to competency mastery. If we can shift our focus from content mastery to competency mastery, definitely we can help our children to learn in a better way, and we have to make our approach multidisciplinary. We have to demolish the hard separation, the boundaries, so that we can really help in the development of competencies of our children. That is the need of our. If really we want a change in our society, in our country, then we have to bring about change in our school. We have to bring about change in our classroom. We have to make our classroom more vibrant, and where every child will get opportunity to participate. We have to provide a very conducive learning environment, and we have to provide a very high quality education. And when we are talking about this high quality education, we have to identify a set of competencies, what we have already done that by defining learning outcome. And we have to identify the values. We have to identify the competencies keeping in view the 21st century skills, because we are in 21st century. So all this demands a curricular reform. I'm very happy that policy has recommended a structure which is 5 plus 3 plus 3 plus 2. And when we say this 5, the policy has taken care of the developmental characteristics, because it is 5, the foundational stage. And this stage, you find a particular type of thinking develops, a particular type of reasoning develops, and it is not very logical in nature, it is rather guided by perception. It is prospective in nature, and we have to take care of that. And this policy has also recommended that we have to introduce vocational education from class 6. We have to make it more craft centered, and we have to make it more holistic. And in secondary, we find a lot of subjects, lot of options, lot of flexibility, and we need that. And we are living in a country with a different language. Policy has taken care of this. The children who are coming from tribal area, their language is not something different from the state language. And how they will learn through their mother tongue. How really we can help them to comprehend, to understand, so that they can cope up with the other children. They can develop their potentiality and they can come to the mainstream. That policy has taken care of that. And while developing the curriculum, we have to take care of this. And we have to bring out the pedagogical reform. And very nice presentation Ranjanaji has made, and we have seen how art can be integrated, how sports can be integrated, how storytelling based pedagogy can be integrated, and how ICT can be integrated. All these things we are doing to make our classroom process more vibrant and to provide better opportunity to our children, so that really they can develop their competencies. No subject boundaries will be there. It will be multidisciplinary. When art will be integrated, and art, culture, everything, they will understand, they will be connected to their root. And we are talking about local flavor. This policy has recommended that we have to add local flavor in your textbook. That is something very, very important, because we have to take care of our culture. We have to take care of our tradition. That can be reflected in our textbook. When we develop textbook, when we develop the curriculum framework, we have to take into account our constitutional value. We have to take into account the human values, ethical values. Along with that, also we have to take into account the local culture, local geography, and their language, everything. So that we are really preparing our children for global citizenship. They will be connected to their root. They will understand their tradition and their everything. Then they can prepare themselves for the future. And in this way, we can prepare our children
as a better citizen. And here, one more thing, this policy demands the perfect integration of pedagogy and assessment in the curriculum. Pedagogy, experiential learning, all these things should be highlighted, back, less play, and all these. But when it will be really integrated with the assessment, it can bring about change. If really we want change, then we have to bring about change in the process of assessment. That the policy has recommended. That the curriculum has to take care of. And this assessment is not something isolated, not separate from pedagogy and teaching learning. And it is an integral part of this curriculum. That is why what the policy has suggested, we have to assess. Policy has suggested holistic development. And it is cognitive, it is ethical, it is emotional, it is social, it is well-rounded development. Well-rounded development. That means every aspect will be taken care of. And we have to assess that in the form of holistic progress, 360-degree assessment, and self-assessment, peer assessment, assessment by teacher, involvement of parents, involvement of community. All these we are going to introduce in our school system. And this curriculum will be something different. It will be a different type of curriculum, different type of textbook, competency-based textbook. And we are talking of competency, highlighting the competency, because content should be selected keeping in view the competencies, not that the content is good that should be included in the curriculum. And since our goal is to develop the competencies, goal is to develop skills, life skills, and accordingly we should select content, accordingly we should organize the content, accordingly we should design the curriculum, and curriculum should be very flexible in nature, and it should be multidisciplinary, and it should be very inclusive in nature, so that we can address each and every child. We can because we know all are unique. That is to be addressed. That is a very challenging task before us. When we prepare this national curriculum framework, we'll come out with the detailed guideline. And this I'm very happy Ranjanaji has already presented that we are going to develop 4 types of curriculum framework, because all these are interrelated. It is not in isolation. That is why what we want. We want a curriculum framework for early childhood care and education. That is most important foundation stage, and literacy, early that numeracy, and the basic skills competency should develop during this period, so that they will be not drop out in your country. They can adjust effectively with any situation. The foundation will be strong. So that is most important. That early childhood curriculum will take care of that. Similarly, when we prepare the curriculum for school education, all these issues we have to take care of. Then only we can really cater to the need of our children, cater to the need of our society. And similarly, when we are talking of the secondary education, and we are talking of many subjects, many emerging areas are coming, that is to be included. And ultimately, what we want? Ultimately, we want that our learners should be autonomous. Our learners should be self-reliant. And that Atmanirbhar Bharat, what our Honorable Prime Minister is highlighting. And this policy really can bring about a change. This policy can contribute significantly in this direction when we will be in a position to develop all the innate potentiality of our children. Then our children will be self-sufficient. They will be good citizens of this country. Our society will be self-sufficient. Ultimately, our country will be self-sufficient. And ultimately, we move towards Atmanirbhar Bharat. And we can achieve this if this policy is implemented properly. That is our responsibility. That is the responsibility of not only the government, that is the responsibility of every citizen of this country. Schools, community relation is to be strengthened. And now policy has recommended school complex, and we have to take advantage of the local resources, local experts. Everybody should come forward, and we should make it a movement so that we can bring about change in our country. We can really help our children in their all-round development. That will be the asset, and education is the most powerful instrument which can bring about change. And this policy has recommended in that way. And this
by doing this, definitely we can bring about change. And I'm very happy that I got an opportunity to interact with you all. And I'm really grateful to all of you for listening to me. I'm particularly grateful to our teachers who are the heroes. And our teachers are going to implement this policy. And it is in the hands of our teachers. They can bring about change. And with this, I conclude my deliberation. Thank you very much. धन्यवाद सर. आपने बहुत अच्छा कहा कि टीचर्स ही हमारे हीरो हैं. So teachers are our heroes who will be implementing this policy in letter and spirit. We would support teachers. We would have this national curriculum framework, but teacher has to implement. And of course, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर इंडिविजुअल आत्मनिर्भर होगा तो वो सोसाइटी को आत्मनिर्भर करेगा और शने शने हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ चलेंगे. So if we want to make our Bharat Atmanirbhar, we have to make our children Atmanirbhar. This is the policy perspective. This is the goal of the policy. Thank you, sir, for giving us a very comprehensively your views. Now I would like to invite Mr. S. Rajkumar Pavitra. He is a trained graduate teacher in Indira Gandhi Government High School, Kattari Kuppam, Puducherry. He has got National Teacher Award in 2020. Before that, he has also received award, innovative National Award for Innovative Practices and Experiment from NCERT. His area was Zero Investment Innovation for Education Initiative. So on this innovation, he has got this award. He has also received award of Best New Media Award in ICT Mela conducted by the CIT in 2020. So, and he is fond of making children, giving space to children for experiments and science laboratory. He is fond of experiential learning, and he provides children opportunities for experiential learning. So I would like to invite Mr. Rajkumar to share his experiences and also how can we implement this policy with his views. Yeah. Mr. Rajkumar. Happy greetings to the dignitaries and to the participants. I place my heartfelt thanks for providing this opportunity to me. Here I share some of the curriculum and pedagogical reforms I have done in my school in relevance with NEP 2020. Now I share with your permission. Ma'am, my screen visible, ma'am? No, your screen is not visible. Yes. Now it is visible. Yes. Okay, thank you. Learning process that happened throughout the nation was guided by NCF 2005. And some of the guiding principles of NCF are connecting the knowledge outside the school and also enrich the curriculum beyond textbook. Learning shift from rote memory to thinking. If we check whether these attainments are attained at the ground root level, only few schools have achieved this. So, Government of India is trying to revamp our NCF 2005 under the new education policy 2020. Practicing teacher, I emphasize 3 curricular reforms practiced by me. 1. Introducing research methodology in our classroom, emphasizing art integrated education, and also introducing 21st century skill, that is program writing and designing the electronic gadgets. These all are the recommendation of NEP 2020. School, most them through rote memory. It made them to learn the content without understanding. So the expected competencies and skills are not achieved.
Rajkumar, or surroundings, and they conduct. What, ma'am? your Hello? voice is not clear. So Okay, please, ma'am. so please Now, check. ma'am? Yeah. Now, ma'am, is it audible? Is it audible? It is audible but breaking. Breaking. In school, in my school, I introduced research methodology. Audible, ma'am. Audible, Yes. ma'am. Yes. Okay, ma'am. Thank you. In my school, I introduced the research methodology for the students of class 8 and 9. They identify the problem from the society to 7 months. They all follow scientific method. Frame hypothesis, perform investigation. They record the data, analyze the data, draw conclusion, and finally find solution to the problem. The learning objective of teaching science is achieved. It made the children to grow with problem solving technique, and they also connected with the society. They learn beyond the textbook, and they also apply the knowledge outside the classroom. The government under RSA, Rashtriya Avishkar Abhiyan, STEM, and several other schemes, they support high school science lab with funds and materials. If research component is made compulsory, all science lab will function in a full swing. For example, my lab is a student-friendly lab. They take the material by themselves and they conduct the experiment. The lab will be utilized to a full extent for doing the project. During they conduct officials, farmers, merchants, neighbors, and so on. It made the children to mingle with different sections of the society and help them to grow in harmony. We conducted nearly 40 research papers, of which 23 are presented in various state level, national level, and international level events. My very few channels to showcase the students' research skill. That is in National Children's Science Congress. I request the dignitaries, while framing the NCFSC 2021, more channels may be opened in different areas like technology, agriculture, astronomy, robotics, power, water, and many areas to show exhibit the research attitude of the children. If we do this, we will nurture the quality scientists for our nation. This is provided by Department of Biotechnology, Government of India. Instead of keeping it in the lock and key, I gave it to the student on every Friday evening. They do the research on Saturday and Sunday. So, observations made by the students, almost they recorded most of the micro and macro phonos. He himself identified and documented more than 100 pollen grains of different flowers. This is Singh of class 9. He himself observed and photographed the microorganisms present in water. So, this is the need of the hour. If we inculcate research attitude at young age, sure sir, tomorrow world will be in the hand of our India only. According to age appropriation, every year each student have to undertake a research project in group. It directly and indirectly provokes many skills. They learn beyond the textbook. They connect knowledge outside the classroom. And we can witness the learning shift from rote memory to thinking. Like water conservation, tree plantation, etc. Now, students are learning this issue as awareness component and they get very little impact.
If we design as an action component, they live with the problem and they understand it in the better manner. Skill. Some read better, some draw better. We should not compare both the child, but facilitate them to move forward with their own interests. This art integrated education helps them to bring out the holistic learning. We should not see art as a separate subject. Physics concepts like inertia, friction, couple, etc., what they learned in the classroom are used for making toys. Likewise, while making toys, they understand the concept better. Both are interrelated. Pandemic situation, students decorated stage we gave training to the parents and on handicraft. Now they are making toys and started earning through it. In order value of workmanship, I made the children to prepare talent board by themselves. Now students and also act as a platform to showcase their talent. 2022 is to art integrated education. If the children are nurtured properly, then there will be no unemployment issues. They will be the entrepreneur of his own company. Our India will move forward from service sector to production sector. My third agenda, sir. Now the entire world is facing a drastic shift towards technology. Starting from mosquito bat to washing machine or electric and electronic component. Unfortunately, no lesson on electronics is present in our textbook up to class 10. During this revamping, more importance may please be given on electronics through hands-on action. Introduction Atal Thinking is an excellent innovation where all electrical and electronic equipments are available. They learn robotics and they are also working with 3D printer. I request the dignitaries that every school must have a ATL lab with trained engineering instructor. If we nurture our student with proper input, sure we will lead China with technology. All our daily needs, we are using app. Starting from wake up alarm in the morning to the medicine reminder in the night. Our ATL lab provides online course on app development. If courses are available to all students, they use this platform to learn and they also produce their own app. Similarly, the electrical course may be available in online mode. So interested students learn at their own pace and they develop their new engineering item. I see smart boards may be established in all institutions. It helps the child to learn abstract concept easily. This e-content is also act as a self-learning and self-assessment tool. So my last slide. Every child from class 9 to 12 must enroll either in national service like NCC or Scout or social service like NSS, NGC, etc. If they are trained on patriotism with service motto, sure sir, we will get the disciplined citizens for our country. With this, I conclude that teaching is not just filling the pile, but it ignites the mind. Thank you one and all for providing this opportunity. Thank you, sir. Mr. S. Rajkumarji, a very nice presentation, and this presentation is giving us good hope that we can implement policy perspective, the manner a teacher is passionate to implement in his school. So
Thank you very much for this comprehensive Thank you, ma'am. Thank you. giving us this experiential learning photographs, real pictures. So now I would like to invite Professor Anjum Sibia ji. So this is the second part of our session. This part will be focusing on pedagogical. So I would request Professor Anjum Sibia to initiate presentation on pedagogical reform as envisaged in the policy to 2020. Professor Anjum Sibia is currently heading Department of Educational Research, Division of Educational Research at CERT. She is in charge of diploma course of guidance and counseling. And she has experiences in the areas of education psychology, curriculum, guidance and counseling, and value education. So I would like to invite Professor Anjum Sibia for that presentation. Anjum ji. Good morning. Namaskar. Thank you, Ranjana ji, for nice welcoming words. I'll straight away go to the presentation. The presentation relates to pedagogy for school education. And in this, I'm going to talk about two aspects. One is the recommendations which are made for pedagogy and been stated in the general recommendations. Will be taking this up. The second, what does it mean to take experiential learning pedagogy to the classroom? So I would just share my presentation. I think it's visible. Is the presentation visible? Yes, it is visible now. Okay. I would start with those aspects of the policy which actually, present a vision of it, which sets the place in the class. Very quickly, I would just touch upon the vision of education which the national policy is talking about. It is talking about holistic development of the learner, cutting across all the domains. It's talking about competency-based learning across knowledge, skills, attitudes, and behaviors. In this sense, both of these things are complementary. That is, it talks about an integrated, individualized learning for the learner. The second one is and pedagogical restructuring, which has taken this structure which is proposed, is supporting the continuity in child's learning and child's development across the different stages in school, right from play schools, from Anganwadis to right up to the time the child reaches formal schooling. And appropriate curriculum, learning goals and pedagogy when we are talking about this. And then comes the curriculum. Then comes the thrust of curriculum and pedagogy, where strength of learners across domains, thinking of learner as an integrated being and focusing on child-centeredness. Anjum ji, your voice is okay, let me just see. Yeah. Is it better? Yes. Is it? You please speak. Okay. So, hello? Yes, ma'am. Yes. Yeah. So the pedagogy which is focused on is experiential. And the nature of this pedagogy which is stated is
interactive manner of learning based on experiences of the child, which is interdisciplinary and cross-curricular, which promotes that kind of a thinking in the child. So we can say that it is within this frame the experiential pedagogy has to be seen. While having a look at what general recommendations in regard to experiential pedagogy are saying, let's take a quick look at the foundation stage, which is 3 to 5 years. Here the policy has recommended that as a national mission, attaining foundational literacy and numeracy be the focus. The focus would also be on mathematical and computational thinking, and this is based on research based on cognitive science. Exposure to languages is also thought very important at this stage. Of course, exposure to all different languages, but the focus will be on mother tongue. And to support all this, Anganwadis will be pedagogically equipped, not only structurally but also pedagogically equipped, wherein activities like tours and other things will be encouraged. The pedagogical strategies are those activities which will support solving ability of the child. Moving to the next stage, which is the preparatory stage, that is 8 to 11 years of age. Now, this stage takes forward the interactive pedagogical style of foundational stage and builds onto that, and pedagogical inputs are in a manner that they are spiral. They need to be seen as those experiences which are building on previous stage. Here the introduction of light textual material will take place, and this is kind of preparing them for more formal and more in a formal setup. Of course, the implementation of three language formula would be the focus would be on local language and mother tongue. Acknowledging that three languages are to be learned, it is also stated in the policy that students can change one of or more of the three languages in grade 6 or 7. However, they have to demonstrate proficiency at the end of secondary stage in three languages, any three languages. Highlighting the bilingual approach, the teaching learning material across subjects would see that this language options are given in the textual materials also. Opportunities to learn language with peers is another highlight of the policy recommendations. Supporting experiential learning content across subjects should be on key concepts, ideas, applications, and on problem solving. Which is being presented is a spiral curriculum, a spiral pedagogical approach, which is building on to the experiences of the learner and complex aspects of the same key concepts and the strategies which are used. The idea is to make classrooms more interactive, enjoyable, collaborative, and supporting experiential learning. The next stage is 11 to 14 years, the middle stage. Now, this is the time when introduction of subject teachers is there and a little bit of subject specifications start. Now, this is the time when abstract concepts, which is according to the developmental stage, for which stage of this particular age group, abstract concepts would be introduced across subjects: sciences, maths, arts, social science, and humanities. And the focus on pedagogy would be on integrated cross-curricular approach. A very significant recommendation is participation in projects or activities which are supporting and which are coming under Ek Bharat Shresth Bharat initiative. This would support learning of languages. Now, the idea is to facilitate language through project activity and develop an understanding of cultural heritage and diversity of India. One of the significant
related to vocational sensitivities in students. A fun course in vocational crafts is introduced in grade 6 to 8, where they get hands-on vocational crafts, some electric work, metal work, and so on. However, this would be decided mapped by the states and by the local community. Coding is another activity which is to be integrated across, and research says that introduction of coding across subjects helps to develop cognitive problem solving and abstract the learners. So this is one of the significant recommendations. Of course, building values across the different school subjects is another thing which is focused on by the policy, and this is to be done within a broad logical framework of value education and value development, the ethical framework, which also coincides with the developmental stages of the child. The policy also recommends that pedagogy should build on the fables and stories. Children relate with characters and stories, and they get inspired from the tales. The learners need to be given opportunity to read and learn from stories and tales from Indian traditions, and like the Panchtantra, the Hitopadesh, and the Chitakas. An integrated health and social sensitivity nurturance is being encouraged across different subjects. However, basic training in health, including preventive health, mental health, good nutrition, is something which needs to be focused on and in the content, and also scientific explanations of damaging effects, detrimental effects of tobacco and alcohol and other drugs. Of course, excerpts of Indian Constitution is mandatory reading for all children. Moving on to the secondary stage, which is marked by 4 years of education, the 14 to the 18 years age group. The highlight is multidisciplinary study. Again, it is very clearly stated in the policy that the child would build onto the middle stage. This repeatedly makes us acknowledge the spiral approach to curriculum and pedagogy, and which also highlights the learner-centeredness, which also highlights the importance of building on to previous experiences of the learners. The option of exiting after grade 10 and re-entering to pursue any vocational course available in grade 11 and 12 of the flexibility offered to learners in taking up the courses. Actually is a way to strengthen vocational subjects and to provide them opportunity to take up internship opportunities in this. In a way, it also introduces them to the world of work. And this is the age when they are exploring and engaging with the idea of what really they want to become and what really they would want to do. Of course, the pedagogy at this stage involves active participation and integration of arts and sports and story-based pedagogy. The clubs are to be encouraged, and indigenous and tradition ways of learning are to be highlighted in the competitions in schools which take place. This helps them to know that what are the cultural ways of learning in our Indian context. Of course, cultural exchange programs and video documentaries of inspirational luminaries of India, ways to present role models to our learners. All this can only be possible, such kind of experiential pedagogy which has been visualized and put forth can only be possible if there is an environment which is supporting this learning. Presenting a curriculum is one aspect, making use of pedagogical strategies is another aspect, but the environment has to support this. The context has to be conducive in a manner that it supports this kind of learning. So highlighting these aspects, the policy has
stated what are the aspects of creating such a learning environment. In nutshell, we can say that the policy talks of experiential learning as developmentally sensitive, holistic, competency-based, integrated, cutting across different disciplines and using diverse methods. Across all the stages, very clearly the focus has been on what the content would be like, how content would be built up across the different stages, what are the processes. So one very, very clearly which is coming out is that increasing complexity in terms of the content presented and building on. And of course, experience has been taken as an on which knowledge is to be generated. And it is in this context, I would, before I move on to what experiential learning means for the classroom, I would just like to I would just like to narrate a small tale, a small fable, which actually highlights the importance of experience is something which does not automatically become educative. Experience has to be educative, and this particular story actually tells us that a wise old man in the village who was reading a lot of books, lot of scholarly literature, came across something called fruit. In that village, there were no fruit trees, and people had no idea about what fruit. Was sharing this knowledge with the villagers. One of the person wanted to visit and experience what this fruit was like. So this person took detailed directions and followed, and after a long journey reached that place where apple orchard was there. And on reaching that orchard, he reached the orchard when apple trees were flowering, when they were in blossom, when blossoms were there. He plucked one and tasted it. He did not like the taste. He plucked another, he tasted it. He still did not like the thing which he thought was fruit, and he concluded that fruit was not tasty food. He came and shared the same thing in the village. Another person decided to come and taste the fruit. So he took the same journey, same detailed directions, and reached the orchard. And reached the orchard at the time when the season was over and the apples had over-ripened. He ate the few apples which were on the trees, and as many of them were lying on the ground. He plucked, he tasted, and he did not like it. He tasted to others, and he felt that they tasted rotten. And he concluded that fruit was a much overrated food and not telling them. Because these two people cannot recognize the difference between flowering apple and overripe fruit. So this makes us understand that experience needs to have an educative value, and it is an important part of experiential learning. It is important for us as teachers and for our teachers in school to understand that if experiential learning means learning, it also means that this is process that and the student, and that it is this process which infuses and the environment. So the experience has to be made educational, its quality has to be it is not automatically or by design and educative. Not all experiences are like that. So this makes us realize that there's a need to look at what are the attributes of such kind of an experience. What is this experience? What are the attributes of experiential learning? Now, in this kind of experiential learning, of course, I've been saying that experience is the basis, and it is most important that such an experience has a feeling dimension. That is, it provides concrete engagement where students actively engage in the experience. The next is the reflective aspect, the dimension. That is, students during this time reflect on the experience, identify connection, inconsistencies, alignments between their experience and prior knowledge.
The third aspect is making abstract conceptualizations, which involves the thinking dimension. These all are the different types of learning styles. So it is through reflection, the child is able to generate. And from here, the student is able to move on to the doing dimension or the active experimentation, which means applying the knowledge to new experience. So we see very briefly that hands-on experience, reflection, connection with previous learning, experimentation and trying out new things are the four attributes for experiential learning to have educative values and for teachers to ensure that experiences have these four attributes, have these four different dimensions of feeling, of observing, thinking. Of course, we know that assessment is part of experiential learning. Policy has been in also, people had highlighted that reporting and a holistic assessment is what experiential learning is looking forward to. So the holistic is in terms of that it is self-referenced, it is to be done by peers, it is done by teachers, parents and other people. And it is across all domains. It is not limited to one domain, cognitive, emotional, psychomotor. It makes use of, it is holistic as it also makes use of different modes, observation, reflection, projects and so on and so forth. It is, like I said, it is self-referenced. It is focusing on learner uniqueness. It is focusing on monitoring one's own learning. The outcomes are need to be seen in terms of competencies. It needs to be evaluated in happening quality-based learning. Of course, the outcomes which are there, they also need to be seen as competency-based products. It will be multidimensional and descriptive in nature. All this actually sets the base, provides the impetus for experiential learning to take place in class. We cannot have one aspect on one kind of thinking and the other aspect of transaction on another kind of a thinking. All these have to be very nicely and inclusively, integratively seen together. It is that we are thinking of transforming classrooms, and when we are talking of transformation in classroom, we talk about processes, we talk about practices which have to be encouraged, which have to be taken up by the teachers, and across the different stages I have highlighted, and so would my colleagues very soon in the next presentation would be talking about questioning, games, discussion, dialogue, simulations, role plays. All these practices, teaching, learning strategies need to be practiced while engaging with the content. Now, practicing of this kind of teaching, learning can only take place when we have an environment which supports these practices. We cannot have an environment which is structured for a dialogue which is only one-sided, which does not allow experimentation, which does not allow learners' mistakes to be accepted. In that sense, we have to give opportunities in that environment where information seeking is encouraged, where take initiative, they will take responsibility for their own learning, they'll have the freedom to explore, they'll have to build on their own strengths. A positive relationship will have to be created among collaboration and cooperative learning, which is the core and crux repeatedly, which has only take place if we talk about culture of care. I mean, this ethic of care would demand that our teachers demonstrate those personal social skills with the students in the classroom, which actually support learning, which makes them feel safe as learners, and safe to make mistakes. I would like to bring to the notice that and the environment, when they interact, when these two things interact, the result is development of those competencies in learners
forward to in this policy. We're looking forward to those 21st century skills which we want our learners to have. But this can only happen if the practices and the environment support each other. Only then we learners who are self-responsible, creative, reliant, self-disciplined, reflective, and self-directed learners, which will be able to take up the challenges of future, of present, which will be able to handle the situations which they come. So just to wind up, I would like to say in one line that experiential pedagogy needs to be seen as a holistic, integrative perspective of learning. It is that perspective which incorporates learners' feelings, thoughts, opinions, experiences, and actions. So it is holistic in terms of the learner, in terms of the approaches, and together this will make experiential learning happen in the classroom. With this, I thank you and I finish my presentation. Thank you so much. Thank you, Professor Anjum Sibia. Though your voice was breaking, but thanks to your comprehensive presentation, that we could make it out that what are your views and what our policy is saying on experiential learning, and also this competency-based education, and also across the stages, this pedagogic perspective. So thanks to Anjumji, and I like these dimensions of early experiential learning, that feeling, thinking, connection, and reflection. Yes, whenever our child will be exposed to experiential learning, these dimensions will work, and finally the child will be a reflective and a thinking child. So thanks to Anjumji once again. Now I would like to invite Professor Padma Yadav. She is working in the Department of Elementary Education and works in the area of preschool education and elementary education. She has worked for 17 years with passion for her subject, early childhood care and education. She is a master's in English and PhD in education. She has done a diploma in ECCE. So I would request Professor Padma Yadav to focus her views on foundational stage, because we need to know in detail that what we require, what pedagogic perspective is required at the foundational stage. So Padmaji. Thank you, ma'am. First of all, I thank all the dignitaries for providing me an opportunity to share my experience. I will be talking on pedagogy in foundational stage. Foundational stage here I mean from preschool to class 1 and 2 in continuum. That is for children from 3 to 8 years of age group. It is universally accepted that foundational stage is the most crucial stage of a learner, especially for growth, development and learning. The all-round capacities that emerge during this period are prerequisite for later success in school and life. Aim of foundational education is to attain optimal outcomes in the development of domains, that is physical development, cognitive development, social-emotional development, creative and aesthetic development, and development of communication, foundational literacy and numeracy. It intends to develop values in children, skills for critical thinking, collaboration, and creativity. Children at this stage, meaning foundational stage, are very active, energetic. So they are eager to learn, they are curious to know. And the socio-emotional aspect, where children like to mingle with each other, they like to talk to each other, they want to imitate also, they want to share and learn. So the aim of our foundational education is development of whole child. Physical development means not only
the development of just the body part, but motor coordination is also important. Children should be given opportunities to run, jump, hop, etc. Social emotional development means children get an opportunity to mingle with each other, share with each other, wait for their own turn, and play and engage with each other. Language development and early literacy here, I mean talking to each other, communicating with each other. Creative and art expression means engaging in art activities, music and movement activities, drawing, coloring, painting, collage making, etc. And cognitive development are all executive functions, self-regulation skills, 21st century skills, classification, seriation, then arranging things in order, counting, matching, etc. All these domains are integrated. They should not be seen in isolation. They are all integrated, interrelated, interdependent. So since children are very active, energetic, curious, and they learn in multiple ways, as our director said, each child is unique, each child is special. They have their own likes, dislikes, interests, hobbies. So they learn in multiple ways. So observation, imitation, repetition, playing, engaging, and experiences. These are the ways through which children learn. They learn by listening to others, listening to stories, rhymes. Just now Anju madam was talking about. The experiences are important. So at foundational stage, experiences should be provided in all the domains and in the area of foundational literacy, numeracy in continuum, right from the preschool stage to class 2. Critical thinking, creativity, scientific temper, problem solving, communication, collaboration, all these skills and processes are actually the building blocks for preschool education, foundational literacy, numeracy, and then moving ahead to preparatory and higher education. So, and the assessment is inbuilt process of pedagogy. In pedagogy, we need to remember three main components, that is play, environment and interaction. Children learn while playing. बच्चों के लिए खेलना ही सीखना है. Or interaction, talking to each other, interacting with the material, interacting with the environment, neighborhood, surrounding. तो ये जो तीन component है, play, environment and interaction, they are important part which should be taken care of when we are dealing with foundational stage. NEP 2020 focuses on early childhood care education and early literacy numeracy in continuum. 5 years we get to build up foundational literacy numeracy. So pedagogy at foundational stage should be flexible. Flexible meaning, I will explain you through activities also, it should not be rigid. अगर टीचर कुछ पढ़ा रही है क्लास में, टीचर ने कुछ प्लान किया है और टीचर सोचती है कि बच्चों का अटेंशन वहां नहीं है, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, शॉर्ट होता है इस पीरियड में. दे कैन नॉट सिट एट वन प्लेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. तो उनको जब देखते हैं कि क्लास में कोई गिलहरी आ गई है, तो पढ़ तो हम रहे हैं शेप्स और बच्चों का अटेंशन शिफ्ट हो रहा है गिलहरी की तरफ, तो टीचर का अप्रोच, जो टीचर की पेडागोजी है, उसमें चेंज आ जाता है. टीचर शिफ्ट हो जाती है, गिलहरी पे बात कर सकती है, अंदर आई बाहर गई इस पर बात कर सकती है. ऐसे बहुत सी चीजें हैं. मल्टीफेसेट, मल्टी लेवल, play based, activity based and discovery based. This is what NEP 2020 is saying. And learning at foundational stage is holistic. Holistic का मैम ने अभी मतलब बताया. It should not, it is not एक ही लेवल पे हम उस पर बात करें. होलिस्टिक का मतलब है complete in all the domains, in all areas, and they should support each other. Preschool stage पे especially, जब से बच्चा प्री स्कूल में आता है, प्री स्कूल में रहता है और प्री स्कूल में पूरा दिन बिताने के बाद घर जाता है, हर एक एक्टिविटी इंटीग्रेटेड वे में पेडागोजी का ही पार्ट है. हाउ टीचर वेलकम्स चिल्ड्रन इनटू क्लासरूम, how she engages herself in activities with children, how she is dealing with children when she is helping children to eat their snacks. उस समय जो प्लेट्स का शेयर करना, एक दूसरे के लिए वेट करना,
ये सब पेडागोजी का ही पार्ट है, क्योंकि इसी से बच्चे वैल्यूज सीखते हैं और हेल्दी हैबिट्स सीखते हैं। साथ ही साथ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो वो भी बच्चे सीखते हैं। तो होलिस्टिक का मतलब यहाँ ये है कि नॉट ओनली इन वन डोमेन कि हम सिर्फ कॉग्निटिव पे ही ध्यान दें, साथ साथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बच्चों को मौका देना है कि वो एक्सप्रेस करें, साथ ही क्रिएटिविटी बिल्ड करनी है, आर्ट्स एंड एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सारे डोमेन्स इंटीग्रेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, और इसलिए जब टीचर अपनी पेडागोजी प्लान करती है, जब टीचर अपना लेसन प्लान करती है, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज चुनती है जो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हो, जो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ हो, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो, और बच्चों को कंक्रीट वे में उनको छूने का, सूंघने का, महसूस करने का भी मौका मिले। तो बच्चे मटेरियल के साथ एंगेज करें, टीचर के साथ बात करें, बच्चे आपस में इंटरैक्ट करें, बातचीत करें, साथ में इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करें। ये सब सारी चीजें पेडागोजी का ही पार्ट है। तो करिकुलम और पेडागोजी इंटर रिलेटेड है, और ये एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर 6 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा बैठ सकता है, उससे हम एक्सपेक्ट करें कि वो 1 साल के बच्चे की तरह, 1.5 साल के या 2 साल के बच्चे की तरह खड़ा हो जाए, दौड़ने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे बच्चा अपनी लर्निंग अटेन करता चला जाता है एक्सपीरियंसेस के साथ, जब वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करता है, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करता है और जब सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करता है। तो हर एक चीज लर्निंग का पार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। तो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, ये सभी अभी शिक्षा पर्व में इतने सारे लेक्चर्स हुए हैं जिसमें ये बताया गया कि 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है 5 साल से पहले। तो ये सारी जो उम्र है बच्चों की, स्पेशली अप टू 8 years, इज वेरी क्रूशियल, इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। तो इसीलिए होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, जॉयफुल होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस बच्चों पर नहीं होना चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए। जो लैंग्वेज का इन्वायरमेंट है, दैट शुड बी वेरी रिच। चिल्ड्रन शुड गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लिसन, एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक। देयर शुड बी एक्टिविटी एरियाज। एक टीचर कैसे क्लासरूम अपना डिजाइन करती है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेडागोजी। किस तरह हमें एक्टिविटी एरियाज डेवलप करने हैं, डॉल्स एरिया, रीडिंग एरिया, राइटिंग एरिया, आर्ट्स एरिया, म्यूजिक एंड मूवमेंट एरिया, different areas can be designed into classroom. If there is no space, no worries at all. रोटेशनल बेसिस पे टीचर अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, बच्चों की नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटी एरियाज को डिजाइन कर सकती है। तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो प्ले इक्विपमेंट्स हैं, टॉयज हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की लर्निंग में। मैंने अभी आपको बताया कि प्ले इज लर्निंग। तो जो टॉयज हैं, दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड, जो सराउंडिंग एरियाज को समझने में ये मदद करते हैं। बच्चों को ये हैप्पीनेस, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। बच्चे टॉयज शेयर करते हैं। एक टॉय से अगर कोई बच्चा खेल रहा है, दे वेट और कोशिश करते हैं कि जब वो छोड़े, जल्दी से छोड़े, तो मैं जाऊं उसके साथ खेलूं। और कभी कभी उसमें झगड़ा भी हो जाता है, तो वो भी कोई बात नहीं है। Then learn to resolve the conflict also. Okay, you play first, then I can play afterwards. So waiting for your turn to come. टीचर अपनी इंटरेस्ट से, अपने हिसाब से अगर सुबह ही एक्टिविटी एरियाज क्लासरूम में डिजाइन कर देती है, तो बच्चे टाइम से भी आना शुरू कर देते हैं कि मैं सबसे पहले जाऊंगा, तो मैं जाके एक्टिविटी एरिया में मुझे खेलने का मौका मिलेगा। तो ये मैंने देखा है, हमारा एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, आईटी नर्सरी स्कूल, वहां हमने देखा है कि बच्चे किस तरह से घर में मम्मी पापा से कहते हैं जल्दी जाना है, बिकॉज आई वांट टू प्ले विद टॉयज, इक्विपमेंट्स, मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द क्लासरूम। तो दिस इज हाउ चिल्ड्रन लर्न। सॉन्ग, स्टोरीज, अभी ये डिस्कशन हुआ, दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर टीचर एंड द लर्नर। वर्कबुक्स which around the alphabet, sounds, words, shapes, numbers, etc., requiring collaboration with teachers and parents is really crucial. For building foundational literacy numeracy में भी जो हम बात कर रहे हैं, it should start from preschool onwards. In fact, घर से ही शुरू हो जाता है, but now I am talking about from preschool onwards. क्लासरूम में किस तरह से टीचर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, साउंड डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटीज, फिर साउंड और लेटर एसोसिएशन,
इन सब छोटी छोटी स्किल्स प्रोसेसेस से बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा सकती है. Opportunity should be provided for sound discrimination, speaking, and for free conversation and guided conversation. Opportunity should be given for reading. Reading का मतलब सीधे पढ़ना नहीं है, पिक्चर्स दिखा सकती है. मैं यहाँ पर एक आपके लिए लेकर भी आई हूँ सैंपल, आप देख सकते हैं. इस तरह के आपके पास बहुत सारे हैं ऑलरेडी. ये एनसीईआरटी में बने थे पुराने. इसमें गांव का सीन दिखाई दे रहा है. इस तरह की कोई भी पिक्चर, ये तो बना हुआ है लेकिन टीचर खुद बना सकती है. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स से लेकर पिक्चर्स को चिपका कर, ड्रॉ कर कर, बच्चों की हेल्प से बच्चों के साथ भी इस तरह के पिक्चर कार्ड्स बनाए जा सकते हैं. और फिर उस पर कन्वर्सेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है. इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितने लोग हैं, काउंट करो, कितने मेल मेंबर्स हैं, कितने बच्चे, छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से जानवर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, पेड़ कहाँ है, उस पर उंगली रखो. इस तरह की कई बातें टीचर कर सकती है. तो ये सब, ये पिक्चर रीडिंग है. ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी मदद करता है, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स को भी डेवलप करता है, बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार भी करता है. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो प्री स्कूल में आप लोग यूज कर रहे होंगे. उनको और बेहतर तरीके से अब यूज करने की जरूरत है, क्योंकि अब पॉलिसी में हमें मौका मिल गया है. 5 साल हमारे पास सफिशिएंट है बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बिल्डअप करने के लिए. इस तरह के कुछ कार्ड्स हैं. देखो, प्री स्कूल में अगर हम देखें, बहुत सारे इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को. कुछ मछलियां बनी हैं, कुछ आप देखिए पत्ता बना है ना. इस तरह की चीजें हम मिक्स करके बच्चों को देख सकते हैं. और इसमें से हम कह सकते हैं, इसमें से पत्ता उठाओ, कौन सा पत्ता है देखो, पहचानो, उसको उठाओ. अच्छा, पत्ता, उसका पहला साउंड क्या है बताओ, क्या सुनाई देता है. जब हम पत्ता बोलते हैं तो पहले किसकी ध्वनि आ रही है, क्या सुनाई दे रहा है, किसकी आवाज आ रही है. तो बच्चा बोलता है प, पत्ता. ठीक इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब बहुत बच्चों के साथ एक्टिविटीज करानी पड़ती है, पत्ता, प से और क्या क्या होता है बताओ, सोचो. तो इस तरह से जब बच्चे सोचते हैं, थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, ये सब चीजें लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम पिक्चर को जब हम लेटर के साथ एसोसिएट करना बताते हैं, पत्ता है और ये क्या है, ये देखिए पत्ता, प, इसका साउंड भी प है, पत्ता, प. इसी प को हम फिर बच्चे से कहते हैं सोचो, घर से पिक्चर्स कलेक्ट करके लाना, मम्मा से बात करना, पापा से बात करना, भाई बहनों से बात करना, और जो पिक्चर्स जो आपको घर पे मिले वो चीजें, वो पिक्चर्स लेके आना. तो हो सकता है बच्चे टिफिन में छोटा सा पपीता भी लेकर आए हैं और दिखाया, मैम ये पपीता है, पपाया है, पत्ता, पेड़, तो इस तरह से उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ती है बहुत. तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, एक्टिविटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो पिक्चर बुक्स भी टीचर्स डेवलप करती हैं. बहुत सारी ऐसी स्टोरी बुक्स हैं जो टीचर्स यूज करती हैं स्टोरी सुनाने के लिए. बच्चों के साथ एंगेजमेंट जरूरी है. तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, चारों तरफ हर चीज लेबल्ड होनी चाहिए. टीचर्स चार्ट लगाएं, आई लेवल पे चार्ट लगाना चाहिए. बहुत ऊपर लगाएंगे तो बच्चा उसको देख नहीं पाएगा, उसकी गर्दन में दर्द हो जाएगा. तो आई लेवल पे चार्ट्स लगाना चाहिए. जब सिस्टमैटिक वे से आप अपनी क्लासरूम में एक्टिविटी कराना शुरू करते हैं, पिक्चर चार्ट्स लगाते हैं, तो बच्चा कभी भी किसी भी चार्ट को फाड़ता नहीं है, किसी भी मटेरियल को डिस्ट्रॉय नहीं करता. बल्कि एक एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाती है तो टीचर कह सकते हैं ना, ओके वाइंड अप, चलो इस मटेरियल को हम किनारे रखते हैं और दूसरा मटेरियल लेके आते हैं. इससे सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ड्राइंग होती है, कैसे मोती में हम धागा डालेंगे. इस तरह की एक्टिविटीज टीचर शुरू करती है. कुछ ब्रिजिंग एक्टिविटीज भी टीचर, फिलर एक्टिविटीज भी टीचर के पास होती है. इसी प्रकार जब आपको न्यूमरेसी डेवलप करना है, फॉर न्यूमरेसी ऑल्सो लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी गोज हैंड इन हैंड. For numeracy, matching, classification, odd man out activity, sequence, seriation, missing, what is missing, इस तरह के कार्ड्स टीचर खुद बना सकती है. मैंने बताया पुराने जो आपकी ओल्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं, बिल्कुल फटने की कगार पे होती हैं, आप उनमें से पिक्चर्स निकाल सकते हैं, उसमें से पिक्चर निकाल सकते हैं और देखिए इस तरह की पिक्चर्स खुद ले सकते हैं. उसमें एक चीज, जैसे इस लड़की के एक कान में झुमका है लेकिन दूसरे कान में नहीं है, हम बच्चे को दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं, देखो ध्यान से देखो और बताओ इसमें क्या नहीं है, व्हाट इज मिसिंग.
ये क्या है, पहचानो, इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या मिसिंग है। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हम बच्चों को करा सकते हैं। ये देखिए मेरे पास बहुत सारे इस तरह के स्कूल्स में अवेलेबल होते हैं मटेरियल। आप चाहे ये डिफरेंट शेप्स में भी होते हैं, जैसे ये आप क्या कर सकते हैं, जो ओल्ड आपका घर में जो आप सोप बॉक्सेस फेंक देते हैं या आप टूथपेस्ट लाते हैं उसका जो कवर होता है वो फेंक देते हैं, उसको यूज करके डिफरेंट शेप्स में उसको काट सकते हैं। और काटने के बाद अलग अलग कलर के अलग अलग चीजें आपके पास होंगी, तो आप बच्चों को कह सकते हैं, ओके नाउ क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू कलर, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू शेप, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू साइज, काउंट हाउ मेनी, गिव मी 2, गिव मी 5, लाइक दैट आप करा सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी शीट्स आजकल आ रही हैं, एनसीईआरटी में भी इस तरह का मटेरियल अवेलेबल है, जहां पर बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, परफोरेटेड वर्कशीट्स। वो बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि ये मौका देती हैं बच्चों को इंडिपेंडेंटली काम करने का। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात कर रहे हैं हम कि लेट अस टीच चिल्ड्रन हाउ टू लर्न, दे शुड बी इंडिपेंडेंट लर्नर्स, वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं, दे गिव एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू सिट अलोन, एंड वो जो परसिस्टेंस ऑन टास्क, सेल्फ रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलरफुल बनी हुई है और आप इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट भी दे सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट शीट्स भी दे सकते हैं। इससे भी मौका मिलता है बच्चों को कलर करने का। बच्चे सुंदर तरीके से उसको कलर करना चाहते हैं, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, और धीरे धीरे उसमें हम पूछ सकते हैं ये जो 3 पिक्चर्स बनी हैं इसमें से कौन सी डिफरेंट है। तो इस तरह की चीजें बच्चों को लैंग्वेज, न्यूमरेसी डेवलप करने में मदद करती हैं। In our country, we have multilingual classrooms. Children come from home language, mother tongue. And teaching in mother tongue is very important, and it has been nationally and internationally recognized as the most appropriate way. Teachers should allow children to express in their own language, and gradually she should shift from home language to school language. Sign language is also important. तो ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट शुड बी पार्टनर्स इन देयर चिल्ड्रंस लर्निंग। तो जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, बच्चों को स्कूल से वापस ले जाते हैं, उस दौरान एक टीचर के पास बहुत अच्छा मौका होता है पेरेंट्स के साथ बात करने का। पीटीएम इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू पेरेंट्स। वी नीड टू मेक देम आवर पार्टनर्स एंड वी कैन यूज देम एज आवर रिसोर्स ऑल्सो। उनके साथ मिलके हमें बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाना है। इस उम्र में, फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनको वो कंपेयर करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बताना है कि हर बच्चा अपने आप में अहम है, जरूरी है, और हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपना पोटेंशियल होता है, अपनी लाइक एंड डिसलाइक होती है। वो अपनी पेस से सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, पर सीखते सब है। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। पेरेंट्स के साथ बात करना जरूरी है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड अब्यूज को कर्ब करना बिल्कुल नहीं, कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न एट फाउंडेशनल स्टेज। पेरेंट्स को अगर हम रिसोर्स की तरह यूज करते हैं या पेरेंट्स को हम अपना पार्टनर बनाते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि क्या पेडागॉजी है एट फाउंडेशनल स्टेज, व्हाट आर टीचर्स ट्राइंग टू डू विद चिल्ड्रन। सीधे रोट memorization is not important, because reading without comprehension or learning without understanding is not going to help us. So how to develop that understanding, how to build learning in children, तो उसके लिए हमें पेरेंट्स के साथ रेगुलर बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम और जो असेसमेंट है उसमें भी मुझे लगता है पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर पेरेंट सोचता है कि मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, और उसके बाद फिर वो कंपेयर करना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट अगर अपने बच्चे की लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे, उसके असेसमेंट में इन्वॉल्व होंगे, तो उनको पता होगा कि उनका बच्चा किस पेस से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। तो अलॉन्ग विद असेसमेंट, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम,
for providing me opportunity. I hope you have enjoyed the session. Thank you so much. Thank you, Padma ji. You have taken us to child's world, जहाँ पर बच्चे स्टोरी सुन रहे हैं और खेल रहे हैं और आपके जो वो कार्ड्स थे और आपकी जो वर्कशीट्स थी वो सब बहुत ही अट्रैक्टिव थी. हम लोग का भी मन करने लगा कि हम लोग भी इनसे सीखें. So thanks to you for this wonderful presentation. Now I would request Dr. K.V. Sridevi ji, since Padma ji has already detailed out this pedagogy of foundational stage. So now I would request K.V. Sridevi ji to focus on pedagogic perspective at the preparatory, middle and secondary stage. I would request her to be very brief also. Dr. Sridevi has done her PhD in science education on effectiveness of constructivist approach in science education from University of Mysore. She served as lecturer and then as a principal at Amrita School of Education, Mysore. She is currently working in Department of Curriculum Studies at NCERT. She has carried out many research projects and teacher training program. She has also developed many manuals and training packages. So, Dr. K.V. Sridevi, I would like to invite you for the presentation. At the outset, let me thank the organizers for giving me this opportunity to share my views on pedagogical perspectives of NEP with respect to preparatory, middle and secondary stage of schooling. All of us are born curious. When we were young children, everything excited us. We asked question after question to parents, teachers, and others. Did we find answers to them? Were we encouraged to find answers to those questions? Children explored the world through senses. Do we provide multisensory experience in the class, wherein every child gets equal opportunity to learn? Did we not have assumptions about students while teaching? Have we ever tried to find how the child wants to learn or learns best? Did we use assessment to know why the child has not learned concept properly? Did we treat all the subjects equally? Did we integrate the subjects while teaching? Let me remind you, friends, that all these subjects ultimately are there in the curriculum to meet very broad goals of life. That is, to develop good, productive, and humane citizens of this country, who respects every life equally, appreciates the culture and traditions, who is able to create, communicate, collaborate, and solve problems. Can we make learning process more flexible and open with wider possibilities to nourish innate curiosities and creativities among the students? Here comes the significant role of the teacher in teaching. In Albert Einstein's words, it is a supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. Yes, pedagogy is an art of teaching children. This art of teacher can really bring in difference in the lives of students. This conviction is reflected in NEP 2020, which stressed on pedagogical intervention. The focus, previous slide. Yeah. Next slide, please. Next slide, please. Next. Yeah. The focus of pedagogical interventions is competency-based education and outcome-based education, which already the previous speakers have spoken about. And it also focused on doing and experiencing, or doing as well as experiencing. And then it even stresses or emphasizes on inclusive context. That is, relating whatever learning is happening should be related to the context of the children, irrespective of the abilities, gender, socio-economic status, and other related factors. Assessment integrated in the teaching learning process, as all the speakers have stressed on this. Art, sports, and ICT integration.
basically cross-curricular approach, what we call it as. And NEP had focused on key concepts, ideas, application, and problem-solving abilities. Now, if you see in this preparatory stage, which starts from 8 years to 11 years, that means the children are in classes 3 to 5. We find that in this particular slide, if you see, there are n number of approaches or methods or strategies are given like play, discovery, activity-based, interactive, creative, discussion, storytelling, collaborative approaches, and so on and so forth. All these methods, if you find, there is something common or something which is having a major purpose, that is to provide contextual, meaningful situations to the students and multi-sensory experiences to the children. As the previous speaker also said, providing multi-sensory experiences really helps in improving the retention ability of the students. And not only that, it makes the learning fun and interesting. Another thing is the policy even highlighted that children are very comfortable in their local language or mother tongue. Hence, we can use bilingual approach to facilitate their learning process. Friends, my experience of being a teacher educator for last 18 years witnessed that in our country, language development is the task of only language teacher, which is one of the reasons for the poor language skills among the students. NEP 2020 stressed the language across the curriculum. That means language development is a responsibility of all the members of the school, whether it is science teacher or mathematics teacher or social science teacher. Now, coming to the middle school, that is the age group where the child is between 11 to 14 years and studying class 6 to 8. We all know that a lot of abstract concepts are introduced at this stage. Thus, these abstract concepts have to be made simple and interesting. This can be done very much by experiential learning. Here, experiential learning plays a very important role. Here, the children, through this approach, will be getting an opportunity to observe, feel, experience, share. All these skills automatically will help in developing 21st century skills. As far as possible, if we can relate it to the lives of students, I think anybody for that matter, even for us, if it is related to our lives, learning becomes fun and interesting. Now, NEP proposes that, the previous slide, proposes that at this stage, previous slide please, NEP proposes that at this stage, every student will be participating in a fun project. This is something very new and which is going to be mandatory, where the children will be appreciating the languages of India under Ek Bharat Shresth Bharat initiative. In this project, as a result of this project, the students will be able to learn about remarkable unity of most of the major languages, which would give them both a sense of unity and the beautiful cultural heritage and diversity of India. To develop vocational sensitivities in students, this stage would ensure that every student will have a fun course. So it will not be an optional. Every child will be getting an opportunity to get hands-on experience on important vocational crafts that are locally available, like carpentry, metalwork, electric work, gardening, pottery, etc. Further, this would also build by having all the students participate in 10 bagless days, 10 days where the children will really get an exposure as an intern, especially in higher secondary, what we presently called as 11th and 12th, in the middle school stage, as well as in 11th and 12th also. Here they are going to talk to local vocational experts like gardeners, carpenters, and so on and so forth, so that respect towards dignity of labor as well as respect towards the professions which are existing in the society. Apart from that, even value building is the focus of this particular stage. All of us know that doing what is right is most important value that has to be learned by the students. This will create a logical framework for making ethical
decisions. Learners have to be given an opportunity to read and learn original stories of Panchatantra, Jatka tales, Hitopadesh, and many other fables that are existing in our country. Apart from that, the most essential thing, that is health and social sensitivities. These have to be nurtured in this stage with basic training in health. Health, when I say, it includes preventive health, mental health, good nutrition, personal and public hygiene, which are very essential right now in the COVID days. We are all experiencing. We have learned many skills, through, in this process. And apart from that, in order to help our children to prevent, to understand the importance of not getting alcohol addiction and other addictions, scientific explanations on damaging effects of all these addictions has to be provided to the students at the school level. All these above behaviors which we have listed out can be developed in an integrated manner using cross-curricular approaches, where arts, sports, and ICT are integrated as per the requirement or need of the learning experience or the concept that are to be taught. Now, secondary stage, if you look into, I think friends, all of us know this is the most beautiful period of the life of an individual, which is full of energy and enthusiasm. In this particular stage, they pay greater attention to aspirations of life. At the same time, this is a period of stress and strain due to hormonal changes in the body. Added to this, the students at this stage are exposed to greater depth of disciplinary knowledge. NEP recommends to provide choice of subjects. Many students, if you and I think all of us, if you think about, there are many students who are who are in a dilemma to choose one particular subject after class 10. And many students, would have dropped out after joining the course when they have found it not suitable or not workable to them. There is no hard separation of streams, arts and science or academic and vocational, and this policy, new education policy, encourages students to opt subjects as per their interest and abilities. At this stage, the students are introduced to vocational subjects. All the students will participate in a 10-day bagless period, even at this particular stage, throughout the grades 6 to 12, including holiday period also. Vocational courses through online mode will also be made available. Children will be given periodic exposure to activities outside the school. This is something which is very important for the all-round development of the students. Visiting to places, speaking to elders, meeting local artists and craftsmen, and visiting higher education organizations, so that a child will get to know what is there lying in the future. Indian knowledge systems as an elective will be given, where the details were given by the previous speaker. I would like to stress on showing video documentaries on inspirational luminaries of India, ancient and modern in science and beyond, will be shown at appropriate points throughout the school curriculum. Further, the students will be encouraged to visit different states as a part of cultural exchange program. Here, if you see subject-specific pedagogies, social sciences will be taught in an integrated approach using various activities, where it is interdisciplinary approach which can be used along with multidisciplinary approach. Interdisciplinary, when I say integrating different branches of social sciences itself, and multidisciplinary when I say integrating various disciplines when a teacher is teaching. So social sciences, again, history if I take, many students find it very difficult or boring. So can we think of making this text come alive in the class? Can we revisit history through the various ways of teaching? And then allowing students to pose questions, voice out their opinions regarding the social phenomenon or processes which are going on in the society. Languages will be taught innovatively using experiential learning, engaging technology, e-learning methods,
games, theater, storytelling, poetry, music. All these things will be taught connecting to their real life situations. Friends, I think all of us agree that when something is related to our life, we learn things better because we think that it is significant and it is so much related to our heart, so we learn better. And for any language to improve, I think something most important is providing input-rich environment to the students. So NEP focuses or stresses on providing, input-rich environment through giving a lot of materials in the schools for language development. Now, when we look into the science and mathematics, of course, science we say is a subject of whys and hows. So surely it has to be taught through discovery or exploratory methods. Using local resources will be an added advantage for any science teacher because a teacher can develop learning aids or learning devices on her own. Here, ICT integration adds on an advantage because there are certain aspects in science which cannot be shown directly to the children. There comes their pictures in ICT. And then textbooks in mother tongue. This is one more thing which NEP had focused or stressed on, that children has to be given textbooks in their own local language or mother tongue. And then, of course, participatory approach where the children pose questions, discuss with each other, and involve actively in club activities and field visits. Now, when I say field visit, it is not just taking the children to some park or any organization or any club or anything. It's not just like that. Planning properly in such a way that they learn something out of it. They come share those findings with their friends so that they even learn communication skills. Mathematics, yes, of course, has to be taught using project-based methods. Various projects can be given to the students which are again related to their real life context. Many times children ask, why am I learning this concept in mathematics? Because it is taught as a separate entity, not relating to the life. Like when I learn square roots or when I learn about Pythagoras theorem, how is it related to my life? How is it going to help me in my life? Probably that is the focus. And then computational abilities and as such coding embedded in activities. Now when it comes to coding, NEP speaks about coding also. It says that coding is introduced in the school. Friends, let me tell you, coding is always there in the school curriculum across the subjects. It is basically to build logical thinking and critical thinking among the students. In lower classes, students learn coding while creating graphics and animations or any other things related to that. Coding as such is a part of computer science discipline, but in higher classes, students learn it as programming. So coding need not be taken it as a separate subject, but it will be embedded or integrated in various school subjects. Now when it comes to the role of teacher, now this is something very important, friends, which I would like to put across. How are we going to plan these pedagogical processes? In this whole session, we have learnt about, we have come across so many terminologies, holistic, integrated, multidisciplinary, interdisciplinary, so many terms we have heard. How are we going to plan our lessons? Now, probably, I have tried to put it in 5 steps. First and foremost thing, analyzing the content. I think all of us teachers, we have content matter with us. We have content knowledge with us. Only the thing is, we need to understand, analyze the content, and try to identify what is there in the content, what type of content is it, and then am I going to help the children at arriving a generalization, or am I going to describe or make the child describe the explain the processes, describe the structure, or am I going to help them in classifying? What is the learning outcome that I'm expecting out of this whole learning process? So when we are analyzing the content, we understand the nature of that content and even keep the learning outcomes in mind. And then, what competencies am I going to develop among the students? All these things can be identified in the first stage itself. Once I identify the nature of the content, then comes understanding the learner and the context of your school or learning. Here when I say understanding student, what do I mean?
I mean understanding the needs of the students, interests of the students, abilities of the students, and learning styles of the student. One of the speaker had spoken about learning style. Each one of us, we learn in a different way. Like some of us learn by reading, some of us learn by listening, some of us learn by doing things. So in my class, what is the learning style of each student? I need to understand that. Once I understand this context, even the context from which context the child has come, we should not go with assumptions. What I mean to say is, research says that teachers proceed by assumptions. Probably we need to keep in mind, we should not go with assumptions. Rather, we should have a clear picture about the background of the students and the context of learning. And then, fine, I understood the content. Now, how am I going to transform the content? How am I going to make it palatable or digestible? And then, how am I going to represent through various experiences? So what are the different materials which I'm going to use? What are the different experiences that I'm going to give? That has to be decided. And then it has to be implemented in an interactive environment. Let us give a free and open environment for the children to discuss and share with each other as well as with the teacher. Where assessment is an integral component, should not be done only at the end of the class. It should be throughout the class through using various formats available. And then most important thing, which many times is neglected, that is reflections. Any learning is incomplete without reflections. So here the teacher as well as the student has to reflect on their own performance. What did I do? What did I learn? How did I do? What were the things that are missing? What are the gaps that I have left? How am I going to improve? Then comes the improvement thing. So follow-up is possible only when we can reflect upon our own performances. I think, friends, if we follow these steps in any of the pedagogical practices that are mentioned in the policy, surely we can improve the learning outcomes of the students. With this, I try to end my talk with a quotation given by Aristotle. The most important thing which fascinated me your years together. One must learn by doing the thing, for though you think you know it, you have no certainty until you try. With this, I thank the organizers for giving this opportunity. Thank you. Thank you, Dr. K. Vishwadevi for giving us elaborative presentation for the pedagogic perspective related to preparatory, middle, and secondary stage. It's really a very learning experience for all of us, and I think teachers will follow the steps you have given. And now I would like to request and invite Mr. Saji Kumar VS, art teacher from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mavelikara, LP, Kerala. He is a national awarded teacher for 2020, and his interest area is art integrated learning, and he likes to be with students and make lots of experience learning activities. So now I would request Sajiji to share his experiences on art integrated learning. That is also pedagogy with us. Sajiji. First of all, I'm extremely happy to you all, especially to NCRT and NET organizations. Give a very nice platform to be to share my experience. Madam, I'm just very proud of that being an art teacher in NBS, which we have got a very golden opportunity to work with the students in a residential setup. And I have done a lot of work with the students, an integrated approach, and with other subject areas, also integrated subject areas. So first of all, I would like to share the same thing, the effective use of multimedia. Effective use of multimedia. Can you hear me, madam? Effective use of multimedia in education. That is actually experimentally implemented in Navodaya Vidyalayas
which was helped me to flourish very nicely to establish in the art. And I will show some of my yeah, activities through some presentations, whatever I implemented in the school and how the students cooperated with me, the true picture I can show you for that. And integrated education, I would like to propose, the first section I would like to propose 4 areas, no, 3 areas. The first one is to visual and performing art. We need actually more teachers, because visual art we already have the art teacher over there, and performing art we have to get some more teachers, especially in the field of classical dance or theater or something like, so that it will be strengthened very systematically in this school. And next, to update our art faculty and the music faculty with the digitalization, because now we are giving only the craft or the creative aspects to develop in that childhood stage, but we require the technical knowledge also, how to produce and how to present the things with the help of multimedia. So I started from 6th class onwards, multimedia tools, a simple way of editing, recording, and just uploading the same files. Like that, if you give a recording studio to the music, after learning the music, the students may be knowing that how to produce that music. That is more important. And technical knowledge about the microphone, handling the mixer, handling various software. Like that, in the visual art, we need to add the digital software, digital art, graphic designing, audio video editing, and mixing, all these things, and stage decoration, all these things, animation, all these things we required. So I just invite your attention for my slide presentation, so that I will explain it in better way. Can you see my slide, madam? So, can you see my slide? Yes, Rajakumarji, please. Okay. Just the art education, art integration with the various pedagogic approaches with the effective use of multimedia. That is what I want to stress over here. And now, every school is required a visual and performing teachers. That too in the 4 categories: art, music, dance, and theater. So these are the first proposal to the NEP to me for the effective implement of the art integrated education, so that these teachers, these creative teachers, can work together with the other subject teachers, and whenever it is possible, they can have an interaction and to construct or to make the creative possibilities for presenting their subject in the form of a music, in the form of an e-book, in the form of animation, or monthly once they can have a cultural integrated show into the common platform in the form of a publication or in the form of a music, in the form of a dance. They can perform these subject content. And next, first of all, we have to understand our own country and our own art forms. Now with the students, I have made a lot of effort with a very vibrant way. We beautified the campus. You can see the slides now. First Madhubani painting, and second the Kerala mural painting, third Pahad painting, and fourth slide is that Worli painting, Pithora painting, and the Madhubani painting. All these things, we have made a very huge canvas the campus. And these experience, initially we are taken with the help of multimedia in the classroom. Students are working that. Then finally it was given a wide space to them. We provided colors and students worked together. So this way they can develop and they can understand the aesthetics and positive values behavior and our rich culture, madam. And then next, this is an art integrated project which I have done in the JNV Trivandrum, a biology park. So with the help of students, we have developed a cross section of ice and that paramuseum and starfish and cell division, everything in a landscapic form. So whenever the students are coming and passing through this park, students are getting very much involved to understand more about the subject content. And it is something like a learning atmosphere in a very stress-free atmosphere and a beautiful atmosphere we can provide for the students. Similarly, I have developed a math park and a chemistry park, something like that in the campus. And this is again a learning by doing. It is another very important area in the school curriculum. Working together. So if you get the time
with the students for making group activities, collaborative learning activities. R can do a lot of things. He can pass a lot of messages to the society and the students' minds. And here you can see the sculptures the students are making with cement along with me, and it is a very rich experience for them, and it will help the child to become a lifelong learner in the field of education in a very interesting and holistic way. And this is a local craft and folk traditions which have a workshop in our school, and every child is participating very actively. They're making and they're understanding their local art forms, local craft, local dance. Like that, similarly, we can do a lot of crafts are available in our area. So art education can do a lot of things from the local art forms. And we can invite the local experts also to share the traditional techniques and other things. This will certainly help the students to understand our own country and with a very rich heritage, with very positive values. And then effective use of multimedia. I have taken a lot of softwares in the classroom. Free Mind, MS Word, MS Excel, and presentation, Google Drawing, Google Translate, Google Indic, WhatsApp, and social media like the Facebook, blog, email, and the graphic software like Photoshop, CorelDRAW, Inkscape, Google SketchUp, PageMaker, Stop Motion Studio, GIMP, MyPen, and Google Drawing, Free Mind. Lot of softwares are available now. So students should know all the software. Then only they can convey, they can communicate certain things in a very professional way. So multimedia is a very helpful tool for everyone. The art should add, every art should equip it with multimedia facilities. That is what one of my major proposal, so that students can understand and produce the things in a professional way. And this is an entry for all the students, and this is possible also. And here you can see the students' videos under art education upload in the YouTube. Whatever the activities we do, motivation and support, whatever we are giving the freedom, these are the two key points for the students to come excelled in that field. So this is another area which integrated with the physical education. So with the help of students, we have beautified this basketball court. Like that, similarly, the sports area, and so that students will be getting more interest on working on it in a very artistic way. And this is another interesting innovative project I have taken. Nowadays, the hotel food culture and junk food culture is coming more, and the parents are not permitting the child to work with there in the cooking area. So I have taken a motivation, motivated the students to go on with the traditional cooking. The students started cooking, and I have conducted a day with all students. They cooked the food and they distributed the food to their classmates. They exhibited very artistically in the common hall to understand about this rich art of cooking. This is also a successful program which I implemented in the school curriculum, can be incorporated with our studies. And another one is organic farming. Whenever we are getting pesticide-free food, then only we can maintain our health and hygiene. So from the school itself, we have to give a platform to students to work on this agriculture also, because then only they can understand how we can preserve the world, how we can avoid global warming, how we can be a integrate part of the universe, something like that. So we have to give that very fundamental theories from the very lower class on this. And this is also some of the programs connected with the CCA. Every program is conducted in a very rich artistic outlook. And we have supported the students for making a little bit bigger platform, bigger artistic way to perform that each and every program. So CCA also, we can do a lot of things in the school. And every school program can be prepared in a very variety stage design, so that that particular design will give an impact to the student's mind. They will remember this program till their end. So that may help the child to come out with a certain quality and certain values, certain importance for presenting their program in a very good work culture. And this is actually the freedom and motivation. Whenever I have given the students, they rush the art room, they do work with me, they themselves, they create the film, they themselves, they
create music. They themselves they create that animation work also with the stop motion studio and producing it. So we should give the freedom to the teacher how to handle the students in a very free way. Then only students will come up for this their own creative ideas. Then they will come up with very excellent results. This is what my experience. So photography also, we have done it digital photography and audio recording and video recording. And this small kids, very small children, you can see that the girls are rushing over there to do something in the graphic designing. And the last slide, it is showing that the biology lab, it is integrated with that project. All the CDs, the cover and everything they prepared digitally and prepared a professional kind of project for their biology subject. And this is actually very important area. We have to give a space to the students to connect with the contemporary art. So we have to give an opportunity to go and visit nearby College of Fine Arts and other art centers like that contemporary art peoples, and they give an opportunity to compete with the professional artists. And now it is starting from the college onwards only. So it can from the school level also the students present their quality paintings along with the contemporary artists, so that they will be having a very professional dream. When they grow up, this initiative will be helping them in a very dynamic way. So I think all these things we finally we have to connect with the international integration, because many other countries also having the similar type of folklore, folk traditions, art techniques, and nowadays the very 3D printing. Lot of latest technologies are coming over. Through the international integration, we have to connect our children with the other countries, so that the integrated approach will come and students must have a universal eye to see all these things. So I think, madam, this is also very important area. This is one of my practical experience which I am sharing. And finally, I should say that education is a lifelong process. Art education can help the child to become a lifelong learner. Every day, every second, the scenario is changing and technology is changing. So the teachers training program also we have to change according to this periodical change. We must give the new equipments and ICT based infrastructure to the school, so that they can come in a very excellent way. So the pedagogy we have to change according to the previous slides and previous concepts, and it may be very helpful. These all things I just explained only because of my practical experience, and which was implemented effectively in the school Jawahar Navodaya Vidyalayas. And I am very thanks to my organization also to provide such a wonderful platform. And we have started this thing 20 years back with Kiran Chandra madam and all the office, all the art teachers working together. We are making our Navodaya Vidyalaya Samiti's residential school center in a dynamic way. Thank you, madam. Thank you for giving a very nice platform for sharing our experience to this NAP platform. And if it is useful for the curriculum framework, we'll be very happy. And thank you, NCRT Director Sir, and all the faculty members, all the speakers. Please, this is a golden time for the art to integrated education with other subjects. This is my final thing, sir. Conclude my speech here. Thank you very much for all. Thank you, Mr. Saji Kumarji, and for a very nice and smiling presentation. So, okay, thank you. And we are very happy that things are really working in school. So you are also promoting experiential learning like anything, and art integrated learning is taking place in very nice manner in your school. Yes, so now, thanks to you. Okay. Now, before I conclude this session, because we are actually out of time now, and our Nai Talim speakers are waiting for us, but one can see that lots of activities are going on in the school, and too many expectations are there of our policy for the school curriculum and school curriculum framework. Yes, madam. I have in my mind, I'm just going to ask one question, and that too only directed NCERT, because this is really my curiosity also.
activities are going on in school and they will be continued, and our teachers will be participating in that kind of activity. But my worry is our textbooks. So given these so many expectations, experiential learning, multilingualism, local flavor, how would NCRT model textbook will look like in future? So I just want to ask our director sir that what learning perspective our textbook will be promoting it, and for each stages like foundational, preparatory, what kind of textbooks we are going to prepare from the NCERT. So this is, I think, my curiosity. Also, maybe many people would like to know this. Thank you for asking a very challenging question, because all the time we talk about the textbook, and now after this policy, how we are going to prepare the textbook. Developing textbook is a logical process. When the policy was released and policy was prepared, keeping in view the psychological foundation, philosophical foundation, sociological foundation, and also the taking into account the political system. So in the same way, when we will develop the curriculum framework, we will also take care of all these foundations. And textbook will also will take care of this. And just I will give you one example, because we were talking about the psychological foundation. This is most important, because what are the developmental characteristics of children have, and how do they think, and what type of thinking they have, how they are getting reasoning, how they are justifying, how they are understanding the cause effect relationship. All these things we should understand before preparing the textbook. Because when we say this foundational stage, you will find that it is up to years 7 and 8. That means this is the developmental. We find this at this stage that reasoning is guided by perception. It is transflective, because they cannot deal with so many variables. They cannot come back to the original point. There is no reversibility in their thought. So keeping in view this, since their reasoning is guided by perception, and we should not expect a logical response from the children. I will give one example. Because suppose two glasses are there, and if we ask a child of below 7 years that two glasses are same, and two glasses are contain same quantity of water in front of the child, and child will observe, if we pour one glass of water into a jar, water level will increase. And after doing this experiment in front of the child, initially the child acknowledged that yes, both are same. But when we pour it into thinner jar and ask the child whether both are same or not, the child response will be that the thinner jar contains more water than the glass. Initially, the child agrees, but after that, and we are doing everything in front of the child. After that, child says that this thinner jar contains more. From the point of view of adult, question is wrong. But from the point of view of the child, question is right. Because child thinking is guided by perception, reasoning is guided by perception. That is why child is giving this type of answer. If at this stage, if we say you are wrong, then we are questioning the self-esteem of the child. That will affect the self-esteem of the child. That is why, while developing the textbook, while organizing the content, and taking decision about the pedagogy, we should take care of this psychological foundation. And that will really help us to prepare age-appropriate textbook, keeping in view their developmental character. In the same way, we have to take into account the sociological foundation, because we are talking about diversity and different categories of children are there, talking about multilinguality. Similarly, philosophical foundation, our culture, our tradition, and Vasudhaiva Kutumbakam, all these things we are talking about, all these are the philosophical things, and the political system, we are in a democratic country. And for the effective functioning of democracy, we want to put citizen. And what type of value, the feeling of cooperation, collaboration is more needed. And keeping in view that when we are going to develop the textbook, and we all know that in the beginning I have also highlighted, every child is unique. And to satisfy every child, we cannot prepare a textbook for
every child, different type of textbook. One textbook will be one. But the textbook will be very flexible in nature. And lot of activities, lot of projects, lot of assignment. So that teacher will have the freedom to use his own pedagogy inside the classroom to cater to the need of each and every learner. That is most important. And this time we are taking care of the Divyang children, and we are also going to develop technique in science language, and we are taking care of the gifted children, and we are taking care of the children who are coming from the deprived section and whose mother tongue is something different from regional bilingual textbook. So all this consideration we have to take care of, because we are going to prepare a textbook which will cater to the need of each and every learner. Each and every learner is unique and their potential should develop. And keeping in view that we should conduct it, because textbook is just a medium. Textbook is not everything. This is just the beginning, and we can go beyond that. And through this policy, when we are discussing this policy and implementation of this policy and curriculum, we have to go beyond textbook. And we have to implement pedagogy in right spirit. So experiential learning, all these things we have to take care of. And also we have to integrate assessment. And textbook will take care of all these. And though in our existing textbook we have suggested many projects, but it is not being implemented properly. That is why we have to orient our teachers about this new pedagogy, and we have to prepare our textbook accordingly, and a lot of flexibility will be there so that we can cater to the need of our children and really help them in their all-round development. That is the need of our, so that we can really prepare good citizens in 21st century, and they can stand on their own feet, self-reliant, and they can contribute in nation building. So that is our plan. And when nation curriculum framework will be prepared, that will give us the roadmap to develop the textbook. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now, it is really relief that textbooks are going to be flexible, learning outcome based, energized, and also giving us a roadmap for how to go beyond the textbook. So lots of, I think, supplementary material will be added to the energized textbooks for students to get opportunity to learn more and more. So friends, now we are at the verge of our conclusion, but of course this is not the end of this session. Now this is the beginning of our work, our task for the school education, for improving quality of school education, and for the holistic development of our children. So now I would conclude the session starting with a statement which Professor Rishikesh Senapati has said. Every child is unique, yes, and we have to address this uniqueness and diversities through high quality education. That is our policy goal. This is for the holistic development of each child. So the way out is integrated, multidisciplinary, and experiential learning. And of course, 360-degree assessment or holistic assessment. And these can be happened through, or we can focus on art integrated learning and multimedia integrated learning, as our teachers, national body teachers have focused or emphasized. And of course, textbooks, I have already concluded that these will be flexible and give lots of opportunities to go beyond textbooks, and of course for teachers to implement flexible and multiple pedagogies. So I'm very, very thankful to all the speakers for this wonderful session, very colorful and attractive presentations. And of course, I think we all had gone for a moment to the child's world, and we were thinking that how can we make our children learn so passionately and so happily. So of course we would make our efforts to do that. So with this, I must extend my heartiest thanks once again to all the speakers of this session, Professor Rishikesh Senapati, Professor Anjum Sibia, Mr. Rajkumar S. Rajkumar, Dr. Devi Sridevi, Professor Padma Yadav and Saji Kumar. So thanks to all of you. I must thank Professor Anupam Ahuja, overall coordinator of this Teachers Fest.
for wonderfully presenting and organizing this. And I also extend my heartiest thanks to Vipinji, JS Ministry of Education, for providing every support. Even this, in the session also, he's really concerned about that, whether links have been shared or not. And I extend my all-hearted thanks to Secretary Srimati Anita Kanbalji, School Education and Literacy, for designing this program in this wonderful way that everybody is getting satisfaction of speaking, and also we are getting very good feedback on the YouTube and other even people are telephoning us. So I also extend my heartiest thanks to all who are observing this session and also giving their feedback, likes on various platforms. So thanks to one and all. So let us move to another session, Nayi Talim. So before I will start presentation on Nayi Talim, I would request NICT to kindly play Gandhiji's new song on Nayi Talim. NICT, please. Audio is not getting. कोई भेदभाव न हो कोई भेदभाव न हो सब एक हो साथ हो सद्भावना हो सब साथ हो सद्भावना हो गांधी जी के सपने को सब पूरी करे तस्वीर नहीं डाली नहीं सारे गामा गाने सा सारे गामा गाना सारी विद्यालय होगा शिक्षा हो अपनी भाषा में विद्यालय होगा शिक्षा हो अपनी भाषा में केवल किताब से ना सीखे चल खुद करके देखे हम इस प्रकार शिक्षित समाज कर करे देशशाली नई ताली नई ताली नई ताली नई ताली नई ताली नई ताली आओ विकास की राह में हम आगे बढ़ते हैं भारत जिससे महान बने कुछ ऐसा कहते हैं
हाथ मस्तिष्क और हृदय को संयोजित करके कौशल विकास की राह में हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ लेते हैं अब तो हर ही शिक्षा विहीन नई तालीम, नई तालीम, नई तालीम, नई तालीम, नई तालीम, नई तालीम, आप सबको नमस्कार और very very good afternoon to all of you. Now this session is on नई तालीम and National Education Policy 2020, नई तालीम और शिक्षा नीति 2020. I welcome respected Secretary Madam School Education and Literacy, Ministry of Education, Shrimati Anita Karwal ji, respected Director NCERT, Professor Rishikesh Senapati ji, Shri Vipin Kumar ji, Ministry of Education, my colleagues from NCERT, other officials of Ministry of Education, and various autonomous organizations working under Ministry of Education. I welcome all my learned speakers of this session. हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर रजनी जोशी चौधरी, जो कि प्रोफेसर इन एजुकेशन है और डायरेक्टर भी है सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में. और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर टीएस जोशी जी, जो कि डायरेक्टर हैं GCERT गांधीनगर गुजरात में. हमारे साथ हैं श्री पार्थेश पांड्या जी, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ITOWE डेवलपमेंट फाउंडेशन गांधीनगर गुजरात. और हमारे साथ हेड टीचर हैं नवा नदिसार प्राथमिक शाला के श्री राकेश पटेल जी, वो भी गुजरात से ही हैं. ये सारे लर्नर स्पीकर हमारे साथ जो है वो आप चर्चा करेंगे नई तालीम और उसकी कनेक्शन शिक्षा नीति 2020 के साथ देखेंगे. नई तालीम के विषय में तो आप सबको बहुत जानकारी होगी. हम लोग एक बार फिर से आपके सामने जो है आपको याद दिलाने के लिए और इसे पॉलिसी से जोड़ने के लिए हम लोग आपके सामने हैं. इस पर चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ हमारे स्पीकर्स का एक बार फिर से. और आप सबका स्वागत है जो हमारे इस सेशन के साथ जुड़े हैं. वो हमारे टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स और NGOs के मेंबर्स, तो इन सब का इस सेशन में स्वागत है. Before I would invite my speakers to speak, I have very brief presentation on the नई तालीम and NEP 2020. एक कोशिश की गई है, हालांकि पॉलिसी ने कहीं इस तरह का टर्म यूज नहीं की है नई तालीम, लेकिन पॉलिसी की बहुत सारी जो है रिकमेंडेशंस जो है और बहुत सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं हमें नई तालीम के पर्सपेक्टिव से जुड़ती हुई दिखाई देती है और एक बहुत ही एक अच्छी आशा देती है कि अगर इसे हम जोड़ कर देखेंगे तो शायद हम और ज्यादा जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला पाएंगे. तो ये है NEP 2020 एंड नई तालीम. नेक्स्ट ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एक गांधी जी के ही पर्सपेक्टिव से, जो उन्होंने कहा था कि लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉट इवन द बिगिनिंग, इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स बाय विच वन कैन बी एजुकेटेड. ये उनके शब्द हैं. और उन्होंने फिर आगे भी कहा था, आई वुड देयरफॉर बिगिन द चाइल्ड्स एजुकेशन बाय टीचिंग इट अ यूजफुल हैंडीक्राफ्ट
and enabling it to produce from the moment it begins its training. ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं कि मैं ये चाहूंगा कि अपने बच्चे की शिक्षा जो है वो हैंडीक्राफ्ट से शुरू करूं ताकि वो तुरंत ही प्रोड्यूस करने के काबिल बन सके, यानी कि खुद एक प्रोडक्टिव सिटीजन बन सके। ये बहुत अच्छी बात कही थी और यही शायद नई तालीम के जो की बुनियाद में था। In 1937, Mahatma Gandhi seeded an important idea to revamp the education system at a conference in Wardha, Maharashtra, to नई तालीम। अगर हम नई तालीम की कुछ विशेषताएं देखें तो वो उनमें से पहली विशेषता है एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। एजुकेशन इन मदर टंग यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को भी प्रमोट करती है नई तालीम। नर्चरेंस ऑफ मल्टीपल स्किल्स इन चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि के अनुसार ही उन्हें वो स्किल सेट दिया जाए, उन्हें वो कौशल सिखाए जाए। लर्निंग गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, हमने पहले सेशन में भी ये बातें की कि लर्निंग को जो है हम टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड ले जाएं, उन्हें फील्ड में ले जाएं, उन्हें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का एक्सपोजर दें जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा बच्चों में रुचि आए, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो और वो खुद जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग की तरफ जो है वो मूव कर पाए। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी इन एजुकेशन, ये एक और फीचर था नई तालीम का। और ट्रेनिंग ऑफ 3H, हम सब जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी बीएड पढ़ते हैं, एमएड पढ़ते हैं, ये बहुत फेमस कोटेशन होता है ट्रेनिंग ऑफ 3H, हेड, हार्ट एंड। तो ये कुछ विशेषताएं थी नई तालीम की। इन विशेषताओं को मैप करने की कोशिश की है एनईपी 2020 की कुछ रिकमेंडेशन से। एनईपी 2020 रिकमेंड कर रही है जो मेकिंग चाइल्ड लर्न हाउ टू लर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। दिस मैचेस विद नई तालीम। नो हार्ड सेपरेशन, सब्जेक्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होगी। बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा, जो उसकी रुचि होगी, उसी के हिसाब से वो सब्जेक्ट ले सकेगा। मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन एट द फाउंडेशनल स्टेज, मदर टंग यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रही है एनईपी 2020। इट इज ऑल्सो इट इज इन ट्यून विद, इन कॉन्सोनेंस विद नई तालीम। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सिमिलैरिटी है, लोकल फ्लेवर इन द करिकुलम, नई तालीम भी यही कहती है और एनईपी भी वही कह रही है। फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट मेथड्स, यस, हम अपने बच्चों की नीड के हिसाब से, उनकी लर्निंग के हिसाब से हम असेसमेंट मेथड्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। रीइंस्टेटिंग स्टेटस ऑफ टीचर्स, ये नई तालीम में भी कहा गया था कि टीचर्स को रिस्पेक्ट देने की बहुत जरूरत है, उनके स्टेटस को ऐसी जगह लाने की जरूरत है जहां पर हमारे स्टूडेंट को पूरी तरह से रिस्पेक्ट दे, कम्युनिटी रिस्पेक्ट दे, सोसाइटी रिस्पेक्ट दे और नेशन रिस्पेक्ट दे, क्योंकि टीचर्स रियली आर द हीरोज इन दिस स्कूल एजुकेशन सिस्टम। And strengthening school community relationship, this is also very important recommendation which policy is giving in detail, whether it is school complex, whether it is school governance, हर जगह community और school के relationship को बहुत ज्यादा focus किया गया है। If we will take further vocational education की जब बात आती है तो policy में बहुत ही clearly कुछ बातें कही है। Every student will take a fun course during grades 6 and 8, 6 to 8. That gives a survey and hands-on experience. हमने पहले सेशन में भी इसकी बात की थी। इसमें कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, आप देख सकते हैं वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। A practice-based curriculum for grade 6 will be appropriately designed by the NCERT. इस पर भी बात की गई है। All students will participate in a 10-day bagless period. So this is also very important कि कुछ दिन के लिए टेक्स्ट बुक से दूर होकर बच्चे वोकेशनल एजुकेशन और वर्क में इन्वॉल्व होंगे और फन के साथ और हैप्पीनेस के साथ सीख सकेंगे। कारपेंटर्स के साथ, गार्डनर्स के साथ, पॉटर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल हमें नई तालीम की तरफ लेकर जाती है। Similar internship opportunities to learn vocational subjects may be made available to students throughout grades 6 to 12, including holiday periods. Vocational courses through online mode will also be available.
तो ना केवल आपको फेस टू फेस मोड में कोर्सेज देने की बात हो रही है बल्कि ऑनलाइन में भी. सो इसके बाद पॉलिसी क्लियरली कह रही है टू ओवरकम द स्टेटस hierarchy associated with vocational education, integration of vocational education programs into mainstream education in all educational institutions is in a phased manner required. This would lead to emphasizing the dignity of labor, importance of various vocations involving Indian arts and artisanship. So this is also one of the recommendations which is taking us back to the Nayi Talim perspective. पॉलिसी ये भी कह रही है कि of course like 3H hand, heart and head, educational policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on principle that education must develop not only cognitive capacities but both the foundational capacities of literacy and numeracy and higher order cognitive capacities such as critical thinking, problem solving and social, ethical and emotional capacities and dispositions. और नई इसको अगर हम अब हमने एक ही स्लाइड में दोनों नई तालीम और NEP 2020 की रिकमेंडेशन डाली है और अगर आप देखिए तो मैच करती है. फॉर दिस वी नीड टू एजुकेशन इफ वी वांट टू डेवलप multiple capacities in our children, then we need to educate our brain through act. This is the Nayi Talim perspective. Learning by doing gives us a joyful feeling and holds our attention fully. Learn if a child will learn by doing, then it will give child joyful feeling and will hold her his attention fully. So in a way, this NEP is a way to retreat Nayi Talim, and today we have our speakers, experienced and learned speakers, who will be giving you further their views on Nayi Talim in consonance with NEP 2020. So I would first like to invite Professor Rajni Joshi. She is a professor in education and Director Center for Women Studies in Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi. She is author of many books. I will name only 3 books here. Vidyalay Prasashan Evam Sangathan, Prabhavi Shikshan, Shiksha Darshan. So these are the books she has written. And she is editor of 2 journals also. Sumangli, a journal of gender and Indian heritage, and seminar proceedings. She has her name 3 awards as women educationist. So now I would like to invite her to present her views on Nayi Talim and national education policy. धन्यवाद रंजना जी. I am audible? Yes, रजनी जी आप ऑडिबल हैं. Okay. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी. आज आपने मुझे इस नई तालीम के अंतर्गत अपने कुछ विचार आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का अवसर दिया, तथा NCERT को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे एक अवसर दिया जिससे मैं इतने लोगों के बीच अपने विचारों को रख सकती हूँ. जहां तक मेरा सोचना है, हम नई तालीम की जो बात करते हैं तो इसमें जो मैं निष्कर्ष निकालती हूँ वो मुझे ये लगता है कि इसमें आज हमें एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें बच्चे को हम स्वतंत्र चिंतन करने दें और उसके इस स्वतंत्र चिंतन को ना तो हम किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें उसमें और न ही किसी प्रकार की अनिवार्यता दें. क्योंकि ये दोनों ही बातें मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी प्रकार की बाधा उसके चिंतन में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसकी चिंतन की प्रक्रिया है वो बाधित होती है, वो रुक जाती है. साथ में ही दूसरा, अगर हम बच्चे को अनिवार्य रूप से उसको हम जबरदस्ती कोई चीज सिखाना चाहते हैं लेकिन उसकी जो रुचि, अभी हम रुचि की बात कर रहे थे तालीम में, तो बच्चा अगर उसमें रुचि नहीं रखता तो उसे सिखाने से कोई फायदा नहीं हो सकता. तो अब इस संदर्भ में मैं आपको कुछ अपने विचार आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि नई तालीम में जब हम
कैरिकुलम फ्रेमवर्क करना चाहते हैं या कैरिकुलम का निर्माण हम अगर करते हैं तो उसमें हम किस तरह की चीजों को हमें उसमें महत्व दिया जाना चाहिए या किन चीजों को हमें उसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो इसमें बताना चाहती हूँ वो मैं कहती हूँ कि जो हमारा एनवायरनमेंट से, जो एनवायरनमेंट की अवेयरनेस है, ये बच्चे को सबसे पहले मिलनी चाहिए। अब इसमें जो हमारा एनवायरनमेंट है, होता क्या है कि जो स्कूल हमारा जहाँ पे स्थित है उसके चारों ओर का एनवायरनमेंट सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए। वहाँ पे क्या फ्लोरा है, क्या फोना है, किस तरह के उद्योग वहाँ पे हो रहे हैं, किस तरह के, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो किस तरह की कृषि वहाँ पे होती है। तो ये बच्चे को जब पता चलेगा, जैसे कि हम कह रहे थे कि बच्चे को पहले हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, उसे खुद सीखने की जरूरत है। हमें ऐसा मौका देना चाहिए कि वो हैंड्स ऑन सीखे बच्चा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उसको इस एनवायरनमेंट के साथ उसे इंटरेक्शन का मौका दें। और जब हम उसे उसके इस एनवायरनमेंट में ले जाते हैं, इस क्षेत्र में ले जाते हैं, तो वहां पे जो बच्चा है, अब इन चीजों से संबंधित लोग हैं उनसे वो इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करेगा तो बहुत सी जानकारियां उसको प्राप्त होंगी। हम नहीं देंगे बल्कि वो स्वयं उन जानकारियों को वहां से लेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि उसके एरिया में कोई ऐसा पेड़ है जो कई सालों से है, तो वो लोगों से पूछ सकता है या वहां पे जो लोग हैं उनसे जान सकता है कि इस पेड़ को क्यों यहाँ पे लगाया गया है, इसके क्या मेडिसिनल वैल्यू है, क्यों हम इसको रखते हैं, ये कितने साल पुराना है, कितने सालों से ये पेड़ यहाँ पे है। या इसके अलावा वो देखता है कोई पालतू जानवर है तो क्यों उसको पालतू जानवर को हमने रखा है, क्या उससे मतलब क्यों हम रख रहे हैं, उसके साथ हम उसे क्यों इस तरीके से उसके साथ ट्रीट करते हैं, किस तरह से हम उसको महत्व दे रहे हैं, ये सारी चीजें। और इसके अलावा हम वहां पे अगर बच्चा अपने चारों ओर जाता है वातावरण में तो वो देखता है कि वहां पे विभिन्न प्रकार के पेड़, पत्तियां, फूल, पौधे हैं, तो वो स्वयं उनमें डिस्क्रिमिनेट करेगा, उनको क्लासीफाई करेगा कि कौन से पेड़ को हम किस वर्ग में रख सकते हैं, किसको हम डाइकोटिलेडन कहें, किसको हम मोनोकोटिलेडन रहे। वो उनकी पत्तियों का निरीक्षण करेगा, उसके आकार को देखेगा, तो बच्चा जो है वो स्वयं इसके बारे में जानकारी को प्राप्त करेगा। इसके साथ ही दूसरी बात मैं वातावरण से संबंधित ये एक बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर बच्चा एक ग्रामीण वातावरण में शिक्षा ले रहा है तो निश्चित ही उसके आसपास कोई ना कोई कृषि का कार्य होता होगा। अब कृषि की भी जानकारी, कृषि में खेत में उगी हुई खेत खलियान तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो कैसे यहाँ तक आए इसका भी ज्ञान वो स्वयं प्राप्त कर सकता है। तो उसका इंटरेक्शन अगर फार्मर के साथ होता है, वो देखता है किस तरीके से ये चीज, वो उसने देखा कि खेत में दाल लगी हुई है, लेकिन इस दाल को वो कैसे पुनः एक पौधे में बदल सकता है, कैसे उससे एक पेड़ को निकाला जा सकता है। इसके लिए हम उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने को दे सकते हैं, हम उसे बीज दे सकते हैं, वो खुद बोएगा उसको, उसमें से देखेगा कि कैसे पौधा निकलता है। तो जो वो है वो अपने आप अपने हैंड से, जो हम अभी हेड, हार्ट, हैंड्स की बात कर रहे थे, वो सब यहाँ पे उसे मिलेंगे। वो अपने दिमाग से सोचेगा, अपने हाथों से काम करेगा और उसको स्वयं आत्मसात करेगा, तो उसको समझेगा क्योंकि स्वयं उसने ज्ञान प्राप्त किया है, हम उसे ऊपर से नहीं दे रहे हैं, उसकी स्वतंत्र चिंतन को हम बाधित नहीं कर रहे हैं। इसी में तीसरी बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इसमें अगर उसके आसपास कोई व्यवसायिक इकाई काम करती है, कोई फैक्ट्री है, कोई उद्योग लगा हुआ है, तो उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में भी अवेयरनेस हो, और उसकी बहुत सी जिज्ञासाएं उससे संबंधित हो सकती हैं बच्चे की। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बच्चे को अपने स्कूल के थ्रू उस वहां तक ले जाएं, या अगर वो ऐसी जगह है जहां बच्चों को ले जाना ठीक नहीं है, मतलब उनके लिए उपयुक्त जगह नहीं है, तो वहां पे किसी तरह की मतलब हानिकारक जैसे या कुछ ऐसी हैं, तो उनके जो लोग हैं जो वहां पे कार्य करता है, वहां से हम किसी को अपने यहाँ बुला के उनका प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या काम होता है, क्या प्रोडक्ट निकलता है, किस तरह से ये फैक्ट्री काम करती है। तो ये सारी चीजें वो चाहे ऑडियो विजुअल के माध्यम से आके उनको बताएंगे। तो इस तरीके से हम उनको ये ज्ञान उनके वातावरण के बारे में देते हैं। इसमें मेरा ये सोचना है कि अगर बच्चा इस तरह से अपने वातावरण के बारे में स्वयं अवेयरनेस जागृत करेगा,
स्वयं जागृत होता है उसके बारे में, तो उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है वो उसकी ये होगी कि वो उसके बारे में एक सेंसिटिविटी को डेवलप करेगा, एक उसमें संवेदनशीलता अपने वातावरण के लिए पैदा होती है। और इस बात संवेदनशीलता से क्या है कि कई प्रश्न उसके मन में उभरते हैं, कई जिज्ञासाएं उसमें उत्पन्न होती हैं, और ये सब चीजें जो हैं जब वो इनके उत्तर प्राप्त करने के लिए चिंतन करता है, वो बार बार इस दिशा में सोचता है, तो उसमें क्रिएटिव थिंकिंग उसमें डेवलप होती है, एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग उसके में आती है, जिसकी वजह से वो एक नए चिंतन को अपने मस्तिष्क में डेवलप करता है या फिर एक नई दिशा में चिंतन को वो ले जाता है। इसी के साथ हम अगर तो इससे और एक और जो फायदा उसको होता है विद्यार्थी को, यहाँ पे जो बच्चा हमारा है वो उस कम्युनिटी में जब जाता है तो उसको एक उससे लगाव होता है, उसे अपनी कम्युनिटी के प्रति एक सम्मान मन में पैदा होता है। अदरवाइज अभी जैसे हमारे देश में ये होता है कि बच्चा अपना गांव छोड़ के चला जाता है और फिर वहां पे आना पसंद नहीं करता, या बाहर चला जाता है तो उसी को पसंद करता है, तो उससे क्या होगा, तो वो अपनी कम्युनिटी को विकसित करने के बारे में सोचेगा, उसके प्रति, क्योंकि उसके मन में एक सम्मान है, उसे लगता है कि ये मेरी कम्युनिटी है, यहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो उसको और अच्छी तरह से उसमें नवाचार करके वहां पे नई नई चीजों को जोड़ने की कोशिश कर सकता है। इससे ये तो मेरा था कि हम एनवायरनमेंट से कैसे बच्चे को जोड़ सकते हैं। अब दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चा जो कुछ सीख रहा है स्कूल में वो ऐसा हो जिसको वो स्वयं प्रयोग करके सीखे, यानी कि हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस उसके होने चाहिए, वो खुद करे उन चीजों को। तो हमें ऐसा अवसर देना पड़ेगा स्कूल में, स्कूल का वातावरण इस तरह का बनाना पड़ेगा कि वहां पे इन सब चीजों के लिए उसके लिए गुंजाइश हो, वो इन सारी चीजों को वहां पे खुद कर सके। जैसे विद्यालय के अंदर हम बहुत सी सामग्री रखते हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। जैसे अगर एक बच्चा स्कूल का वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के उसके पहिए का निर्माण कर देता है, पहिया बना देता है उसमें कटिंग करके, तो वहीं पे दूसरा बच्चा उसी लकड़ी के टुकड़े से एक गाड़ी बना सकता है, और तीसरा बच्चा उसी लकड़ी के टुकड़े से एक घर बना सकता है, और चौथा बच्चा इन सारी चीजों को पेंट कर सकता है। और इसके अलावा अगर एक कागज को लेके एक बच्चा काट के उसको अलग अलग आकृतियों में बदल रहा है, तो दूसरा बच्चा ये भी कर सकता है कि उससे एक वो बहुत सुंदर पुष्प बना सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं हमारे जो उस कागज की नाव बनाते हैं या उस कागज का एरोप्लेन बना के उसको उड़ाता है। अब जब बच्चा इन सब चीजों को बना रहा है तो हर बच्चे की जो एक थिंकिंग है वो अलग अलग दिशा में काम कर रही है, हर बच्चे की रुचि को विकसित होने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे उसकी जो क्षमता है, जो उसका चिंतन है, वो एक अलग दिशा में काम कर रहा है, और हर बच्चे के अपने चिंतन को, अपनी क्षमता को, अपनी रुचि को एक स्थान वहां पे मिल पाता है। इससे अब जैसे बच्चा अगर यहाँ पे एक मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वो एक गाड़ी बनाता है लकड़ी से, माना उसने एक लकड़ी का चौकोर टुकड़ा लिया और उसमें वो 2 पहिए लगाता है, वो देखता है इससे बैलेंस ठीक नहीं बन रहा, तो वो उसमें 3 पहिए लगाता है, फिर वो देखता अभी भी, तो वो देखता है 4 पहिए लगा के इसका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है, या 3 को लगाना है तो किस प्रकार लगाया जाए। तो इस तरह से जब बच्चे करते हैं तो उससे क्या है कि वो विज्ञान को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, वैज्ञानिक चीजों को भी सीखते हैं, उसको पता लगता है कि संतुलन के लिए उसे किस तरीके से ये जो गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व केंद्र होता है उसको हम कैसे इसमें स्थापित करें कि वो उसकी गाड़ी जो है वो पहियों से बैलेंस हो जाती है। तो ये सारी चीजें, या अगर वो अपनी कागज की जो उसने एक नाव बनाई है उसे वो पानी में तैराने की कोशिश करता है, तो उससे उसे पता लगता है कि ये किस तरह से तैर रही है, तैरने के नियम वो समझने लगता है। अगर उसमें कहीं छेद हो जाता है, उसके अंदर पानी आ जाता है, तो दिखता है उसकी नाव डूब जाती है। तो इससे वो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो बच्चा जो है अपने आप चिंतन कर रहा है, उन चीजों को सीख रहा है, और इस तरह से जो बच्चे सीखते हैं वो निश्चित ही उनके लिए बहुत अच्छा एक अचीवमेंट होता है। और इसी तरीके से बच्चे अगर ये जानना चाहें कि ये बीज जो है ये पौधे में कैसे बन गया,
इतना बड़ा पौधा कैसे बन गया, इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया। तो उसको भी वो अगर स्वयं लगा के देखता है जमीन में, तो देखता है इसमें कितना पानी डालना है, कितने दिन ये बीज जो है पौधे में निकल के आता है, कितना बड़ा पौधा बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो है उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होंगी और वो स्वयं इन सब चीजों को कार्य करेगा। और जो हम मतलब तालीम, जो हमारी नई तालीम है, अगर इन सब चीजों को ध्यान में देगी तो बच्चे अपने आप स्वयं अपने कौशलों का विकास करेंगे, अपने स्थानीय वातावरण से कौशलों का विकास करेंगे, अपनी भाषा में इन सब चीजों को सीखेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है उनके लिए बाहर से उनके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएंगी, बल्कि बच्चा स्वयं इन चीजों को कर रहा है। तीसरी बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को स्थानीय संस्कृतियों, कलाओं और नृत्य और संगीत जैसी चीजों से भी हमें अवगत कराना चाहिए। तो हमारे जब हम कैरिकुलम, तो उसमें भी हमें इसको एक स्पेस देना चाहिए बच्चे को, कि जिससे वो इन सब चीजों के बारे में जान सके, उनको सीख सके। और इसमें वो कुछ, क्योंकि अगर आज छोटी उम्र में बच्चे ने इसको सीखा है तो वो अगर इससे लगा रहता है तत्परता, वो बड़ा होता है और बड़ी कक्षा में जाता है तो उसके लिए वो और नवाचार, नए एक्सपेरिमेंट, नए प्रयोग करता है और एक नवाचार को जन्म दे सकता है। इसके लिए मेरा ये सोचना है कि अगर हम उस एरिया की जो वुमेन है उसको भी अगर इससे जोड़ने की कोशिश करें, उनको एक मेंटर बना दें अगर हम, तो उससे क्या होगा कि वो जो लोग जो हमारी लोकल जो मतलब फोक डांसेस हैं, फोक म्यूजिक होता है और इसके अलावा बहुत सी हमारी ऐसी कल्चर वगैरह है वहां पे, तो उसको हम विकसित कर सकते हैं। वो टीचर मतलब वो कभी कभी आकर वो इन सारी लोग जो स्थानीय चीजें हैं उसको वो विकसित करा सकती है। इसके साथ ही हम बच्चों को जो उस एरिया में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हो रहे हैं उसके से भी जोड़ना चाहिए बच्चे को, छोटी अवस्था से ही, छोटे क्लास से ही। तो ये जो कुटीर उद्योग और जो ये छोटी चीजें वहां पे हो रही हैं, आज हम MSME की बात कर रहे हैं, तो जब बच्चा यहाँ से इनसे जुड़ेगा तभी वो इनको विकसित कर सकता है। और जब इसमें वो करेगा तो उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना, मतलब उसको विकसित कर सकता है, इस क्षमता को अपने विकसित कर सकता है। और इसके साथ ही जब वो बड़ी क्लास में जाता है तो ये वोकेशन जो है उसका, वो हो सकता है उसकी एक वोकेशनल आइडेंटिटी बन जाए और वो बड़ी क्लास में इसी के बारे में और आगे अध्ययन करे, रिसर्च वर्क करे और इससे कुछ नवाचार वो वहां पर स्थापित कर पाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं, जो अगला मैं बात बताना पॉइंट लेना चाहती हूँ, वो मेरा ये है कि मैं मानती हूँ कि हर बच्चे में, और ये सारे एजुकेशनिस्ट इसको मानते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उसमें उतनी ही प्रकार की क्षमताएं होती हैं। बच्चा अपने आप में, हर बच्चा एक यूनिक बच्चा है, उसकी क्षमताएं यूनिक होती हैं, उसके जो टैलेंट्स हैं वो बड़े यूनिक होते हैं, बड़े धनी होते हैं अपने टैलेंट्स के। लेकिन हमें एक वातावरण उसके लिए पैदा करना है स्कूल के द्वारा कि वो अपनी क्षमताओं को विकसित करे। इसी तरीके से बच्चों में एक बहुत अच्छी क्षमता होती है क्रिएटिव राइटिंग की। कुछ बच्चे छोटी उम्र से ही बड़े ही अच्छे चिंतक और विचारक हो जाते हैं, वो चिंतन करते हैं चीजों के बारे में और फिर उनको लिखना पसंद करते हैं, अपने विचार उस तरीके से देते हैं। तो इसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि हमें जो हमारा कैरिकुलम है उसको इसका के लिए जगह होनी चाहिए, इसको स्थान दिया जाना चाहिए। और इससे जो हमें एक मतलब मुझे जो एक फायदा नजर आता है तो वो ये है कि जो बच्चा स्थानीय भाषा में जब इस तरीके से अपनी कल्पनाओं को लेखन में बदलेगा, लिखेगा, क्रिएटिव राइटिंग के रूप में सामने लाएगा, तो इससे जो हमारा लोकल वहाँ का जो मतलब लैंग्वेज है उसकी तो विकास होगा और इस तरीके से हम लोकल लिटरेचर को भी डेवलप कर पाएंगे। और बच्चे के स्कूल में इस तरह की व्यवस्था हो कि वहां पे लाइब्रेरी की तो बात की जा रही है, तो वहां पे जो लाइब्रेरी होगी, जो पुस्तकालय होगा, उसमें इन सारी चीजों को बच्चों को रखा जाए। यहाँ तक मैं तो ये भी इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि विद्यालय में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि बच्चा जब इस तरह की कोई
अपनी मतलब क्रिएटिव राइटिंग देता है, स्कूल में लिखता है, तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसका ये प्रकाशित किया जाना चाहिए एक छोटी पुस्तक के रूप में, और वहां पे उसको रखा जाए अगर, तो बच्चे को इससे बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और उसकी ये जो चिंतन शक्ति है, क्योंकि ये भी एक उसकी क्षमता है, ये आगे विकसित हो सकती है। इसके साथ ही मैं इन सब बिंदुओं के साथ मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हम इसमें अपनी मतलब जो हमारे बच्चे के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो खुद स्वयं करके चीजों को सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग जिसे हम कहते हैं, तो वो खुद कर रहा है, खुद उससे अनुभव ले रहा है और उससे वो अपनी ज्ञान की रचना भी अपने आप करता है, वो अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर रहा है वहां पे। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें इस तरह की मतलब सुविधाओं को उनके पास मतलब उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे वो सृजनात्मक चिंतन कर सके और अपने इस चिंतन को अपने गांव से एक विश्व के स्तर तक पहुंचा सके, क्योंकि उसका चिंतन जो होता है बच्चे का, वो उसका शुरू में एक छोटा चिंतन होता है। उस चिंतन को ही अगर हम प्लेटफॉर्म देते हैं तो वो एक दिन बहुत बड़ी खोज में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसकी ये सोच, उसकी ये क्रिएटिविटी, उसकी ये आवश्यकता को हम एक चिंतन में बदलने के लिए प्लेटफॉर्म हमें देना चाहिए, जिससे बच्चे को हम उसके अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार विकसित होने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं अपने स्कूल को, अपने विद्यालय को, और वो इस प्लेटफॉर्म से हमारे मतलब इतने नवाचार करे कि वो विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करे। यही शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर रजनी जोशी चौधरी जी। बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा और बहुत ही आशावादी। बच्चों के स्वतंत्र चिंतन में बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही स्वतंत्र चिंतन आज छोटे बच्चे का लघु चिंतन के रूप में है, लेकिन वही जाकर आगे पूरे विश्व में लीड कर सकता है और नवाचारों को आगे बढ़ा सकता है। तो थैंक यू जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से नई तालीम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो प्रस्तुतियां थी उनको जोड़कर और एक अपने ढंग से अपने अनुभवों के आधार पर जो बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर टी.एस. जोशी जी, Director, Gujarat State Council of Educational Research and Training, Dr. जोशी is बहुत किताबें पढ़ते हैं और हम लोग को समय समय पर रेफर भी करते रहते हैं कि ये किताब पढ़िए, ये किताब पढ़िए, बहुत अच्छी है, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है। हम लोग जब निष्ठा प्रोग्राम में भी इनके पास गए थे तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी किताबें खोज कर रखी हुई थी। अभी जब नई तालीम से संबंधित बात भी आई तब भी इन्होंने हमें 2-3 किताबें बता दी कि इसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो ही इज एविड रीडर, जो इनकी ये हमें क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड टीचर एडुकेटर एंड वेरी गुड लर्नर, ऑलवेज रेडी टू लर्न। GCRT गुजरात ने बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को सामने रखा है और इनके लीडरशिप में भी बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है। He is focusing on school education. He is passionate about that. इसके लिए इन्हें कहीं भी गुजरात के इस छोर से उस छोर तक या फिर इस छोर से उस छोर तक जाना पड़े तो ये बिल्कुल नहीं थकते हैं। तो these words I just invite Dr. T.S. Joshi to present his views. Dr. T.S. Joshi. नमस्कार, थैंक यू MHRD NCERT टीम, प्रोफेसर सेनापति साहब, अरोरा मैम, अभी जो रजनी मैम ने मेरे पहले जो वक्ता थे बात की, तो जितने भी दर्शक है सबको हमारा सादर प्रणाम। आज हम एक टीम के हिसाब से काम करेंगे। हम मेरे साथ साथ जुड़े हैं पार्थिश पंड्या और हमारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं राकेश जी नवा नदीसर प्राइमरी स्कूल से।
तो हम तीनों मिलके कुछ जो गांधी जी की प्रयोग भूमि गुजरात रही है और गुजरात में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनके बारे में आज भी उनका एक असर है। गुजरात में आज भी 1200 से ज्यादा गांधीयन थॉट पर चलने वाली स्कूल है जो प्योरली 100% रेसिडेंशियल स्कूल है। हायर एजुकेशन की बहुत सारी इंस्टीट्यूशन भी है। आप गुजरात विद्यापीठ को जानते हैं जो सबसे पहले राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के तौर पे जाना जाता है, गांधी जी खुद ने एस्टैब्लिश की थी। बहुत अच्छे से प्रयोग गांधी जी के साथ में रहकर नाना भाई भट्ट ने किया था। तो उनके ही शिष्य गिजुभाई बधेगा जी को हम सब जानते हैं जो भावनगर में उसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा में काम किया। तो नई शिक्षा का जो मूल है वो जो उनकी सोच थी इस देश की क्या जरूरत थी इस वक्त, वही सोच के गांधी जी ने शुरू किया था। इस राष्ट्र की सोच के आधार से हम नया राष्ट्र बनाना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो क्या जरूरत रहेगी। तो इसी हिसाब से जो इस बार सोचे थे सभी चीजें, जितने भी बात नई तालीम में है, जितनी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, वो सब बात को मिलाते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ऐसा डेलोस कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें भी वही बात लिखी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, जो बात नई तालीम में है। और डॉक्टर जैक्यूस डेलर्स है उसने भी कहा है जो 4 पिलर बताया है एजुकेशन का, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। वो चारे चीजें जो उसने बताई है वही सब चीजें हम एजुकेशन पॉलिसी में और नई तालीम में देखते हैं। आज मेरा तीनों का जो क्या क्या बताएंगे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पार्ट में है। नई तालीम का एक अच्छा सा प्रयोग का फल कैसे मिला है वो सबसे पहले मैं बता दूं कि गांधी 150 की शुरुआत 2 साल पहले जब सेलिब्रेशन की हुई, इस वक्त एनसीईआरटी में हमने गांधी अध्ययन केंद्र की स्थापना की और उनके तहत गांधी अध्ययन केंद्र के तहत हम वही प्रयास कर रहे हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कैसे बढ़ावा मिले। लॉकडाउन के तहत हम फेस टू फेस मोड में बहुत कम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑनलाइन कोर्स दीक्षा के जरिए चल रहा है। 2 बैच अभी तक हुआ है, 3000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट उसमें जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ प्रैक्टिकल और थियरी की बात नहीं है, उसमें जुड़े हुए सब लोग को कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करना है। उसको आधार से जो भी गांधी जी ने बताया नई तालीम में, इसी हिसाब से प्रोजेक्ट करके हमको सबमिट करना है। तो उसकी शेयरिंग वर्कशॉप भी हुई। तो जितना भी पार्टिसिपेंट का कोर्स कंप्लीट होता है उन लोगों को वो प्रेजेंटेशन करते हैं। दिन में 10-12 प्रेजेंटेशन एक दिन में होता है, बाकी के सब लोग वो सुनते हैं। तो एक तरह का वो पेपर प्रेजेंटेशन वर्कशॉप साथ में कोर्स का पार्ट बन गया है। बहुत अच्छे से वही चल रहा है। इस सब काम करते करते हुए देखा तो नई तालीम समझने के लिए हमको एक बहुत अच्छी छोटी सी बुक मिली। उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको आज करवाना चाहता हूँ। अरविंद गुप्ता जी की जो साइट है उसमें बहुत सारे मटेरियल है। उसमें से एक मेरी जादूशाला, माय मैजिक स्कूल बुक अवश्य पढ़िए। 7 to 8 पेजेस की है, लेकिन नई तालीम क्या है वो समझने के लिए बहुत अच्छी बुक वही है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी में अभी मैडम ने बताया सुबह में असेसमेंट की भी बात करनी है, 360 असेसमेंट की जो बात की है, डिग्री असेसमेंट की बात की है। तो अभय जी ने बताया कि हमारी एग्जाम कैसे होती थी, वो कैसे पढ़े। गांधी जी जहां काम किया इस वक्त वर्धा एजुकेशन पॉलिसी बोले या नई तालीम बोले 1938 में, तो वर्धा की जो इंस्टीट्यूशन थी सेवाग्राम में ही डॉक्टर अभयबंग पढ़े। अभयबंग का ज्यादातर लोगों को परिचय होगा, इस मान के मैं ज्यादा नहीं देता हूं, लेकिन वो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आज भी मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो मेडिकल फील्ड में जो उसने प्रयोग किया है उनके बारे में वो जाना जाता है। बहुत अच्छा सोशल वर्क भी है। तो वो कैसे पढ़े, उसने लिखा है कि जीवन के साथ
संबंध रखने वाले मैथमेटिक्स। हम तो ऐसे बोरिंग पढ़ाते हैं स्कूलों में कि नल की एक टंकी शुरू करो, एक नल नीचे से शुरू कर दो, एक नल ऊपर से शुरू करो, कितनी देर में वो पानी टंकी फुल हो जाएगा। तो ऐसे बोरिंग सिस्टम की जगह पर अभय बंग बताता है कि हमारा टीचर, उसको जो सेवाग्राम था वहां कुछ ना कुछ काम हर दिन करना पड़ता था, श्रम करना पड़ता था, उद्योग द्वारा केळवणी थी, तो उसका 2 दिन गौशाला में वो रहा, कावशेड में। तो वहां गए तो 2-3 दिन उसने गौशाला देखी। बाद में उसका जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो टीचर्स ने बोला कि भाई एक गाय दिन में कितना पानी पीती है। तो अभय बंग ने देखा, कई दिनों तक उसने देखा होगा, उसकी एवरेज निकाली होगी। बाद में दूसरा सवाल था कि गौशाला में कितनी गाय है, और उनके लिए गौशाला नहीं बन रही थी, तो उनके लिए जो पानी का टैंक बनाना था उनके पानी पीने के लिए, तो कितना पानी उसमें रखना चाहिए, कितनी बड़ी टंक बनाना चाहिए। तो उसने इस वक्त वॉल्यूम सीखा, वॉल्यूम के हिसाब से बहुत सारी वाटर टैंक जो जहाँ बनी थी वहां देखा, उनकी बाहरी सरफेस का क्षेत्रफल, वो सब उनके इस जरिए, प्रोजेक्ट के जरिए सीखे। वो टैंक बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए, और पूरी टैंक बनाने तक पूरा गणित का सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली सीखा। तो जो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो क्या वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है? उसने बहुत अच्छे से लिखा है। तो 8 पेजेस की जो बुक है, उसने लिखा है कि मैं 9वीं कक्षा तक वहां पढ़ा और मेरा हर कोई दिन खाली नहीं था। एज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन उनको रसोई घर में भी काम करना था। उसको हर दिन जितना भी काम पूरे का पूरा स्वनिर्भर हम बोल सकते हैं, इस तरफ का स्वास्थ्य बनाना था, तो हर काम में वो जुड़े रहते थे। उसका जो बायोलॉजी की बात करते हैं, बोटनी की बात करते हैं, तो टीचर कैसे उनको गार्डन में ले जाते थे, पूरा के पूरा गार्डन में ही पढ़ाई होती थी, बाद में वो सीखते थे। बहुत पौधे पन्ने कैसे लगते हैं, कब फ्लावरिंग होते हैं, तो वो सब प्रैक्टिकली सीखते थे। बाद में स्कूल में टीचर कुछ रिफ्लेक्शन करवा के जोड़ देते। तो वो बोलते थे कि मैं जब मेडिकल साइंस में पढ़ा तो मुझे कोई चीज नई नहीं लगी, उस साइंटिफिक नाम भी उसने कुछ फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। गणित के अलावा उसने सबसे अच्छा लिखा है रसोई घर। रसोई घर में वो जो सीखे, वो लिखते हैं कि 10 साल मेरी मेडिकल साइंस की पढ़ाई में मैं जितना नहीं सीख सका, उनसे ज्यादा मैंने रसोई घर में सीखा। तो रसोई घर में जो प्रयोग करते थे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या, उसका इकोनॉमिक्स भी देखना था, उनका बजट देखना था, वो सब देखते देखते कभी कभी जो प्रयोग करते थे वो प्रयोग में निष्फल भी हो जाते थे। तो लिखते बहुत अच्छे से लिखा है कि शाम को जब बर्तन साफ करते हैं, पूरी रसोई करता, 100 लोगों का रसोई एक रसोई घर में बनता था। 8 स्टूडेंट का टर्न बाय टर्न वो रसोई घर देखना का जिम्मेदारी थी। तो पूरे का पूरा प्रोसेस जो है रसोई का, उसमें कैसे साइंस है। और वो जब निष्फल हो जाते थे उसका प्रयोग, तो रात को बैठ के जैसे बर्तन साफ करते करते कोई घायल सैनिक का जो हाल होता है, इस मनोस्थिति में वो रहते थे। लेकिन सीखने का जो मिला है वो मेडिकल साइंस से भी ज्यादा सीखा, ऐसा उसने खुद ने लिखा है। तो मेरा जो बताना है, उसके जो एग्रीकल्चर के प्रयोग है, उसके जो जीवंत शिक्षा, वो जो बोलते हैं, जितने भी प्रयास वहां आसपास की दुनिया में जो था, उस सब में से कैसे सीखा जाए, उसकी वो स्कूल में एक मेले लगते थे, संतों के मेले ऐसा नाम था, ऐसा प्रोजेक्ट था। हर आषाढ़ मास में वो लगता था, 15 दिन तक चलता था। तो जितने भी अलग अलग संत है, वो संत के बारे में, उनकी जीवनी क्या है, उसने लिखी हुई साहित्य क्या है, उसने जो भजन दिए है तो वो क्या है, उसकी फिलोसॉफी क्या है, सब बच्चे प्रेजेंट करते थे। शाम में किसी अच्छे लोगों का उनका लेक्चर होता था, संगीत संध्या होती थी। तो 15 दिन के बाद वो जो सीखते थे, उसने बताया है कि मैंने भाषा कब पढ़ी पता नहीं, संगीत कब पढ़ा, दर्शन शास्त्र कब पढ़ा, हिस्ट्री कब पढ़ा, पता ही नहीं। सब ऐसे इंटीग्रेशन वे में हम अलग अलग सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो खुद एक प्रोजेक्ट के तहत उसने क्या क्या चीजें नहीं सीखी। मैं
पढ़ना चाहूंगा कि जो लिखा है उसमें मेरी जो नई तालीम थी, न्यू मेथोडोलॉजी थी, उसमें कैसे उनकी एग्जाम भी होती थी 360 डिग्री की जो हम बात करते हैं। तो मैं दो ही छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ। न्यू मेथोडोलॉजी, our school was the creative laboratory where several novel experiments were undertaken to implement Gandhiji's vision of education and Tagore's love and arts. I will illustrate them with a few examples. Apart from the written exams, we were also tested in our ability to cook, write, play act, give lectures to the large audience and write articles. 360 degree assessment की बात नहीं हुई. The novelty of experiment was the flexibility inside the classroom. Every class has some clever and some not so clever student. Children did not have to appear for the same standard examination. This meant that in the one single year, I could simultaneously pass 7th grade English, 9th grade mathematics and 10th grade Marathi. Inculcation of good values was integral part of our education system. As a part of our daily school activity, we lived these values and imbibed respect of the manual labors, self-reliance, equality and working for the common goods. Apart from these humane values, students also took part in struggle waged in the country for social transformation, Azadi Kaal mein. For a few days, the school was shut and all the students went away to far-flung village in Bihar to take part in the Bhudan movement by Vinoba Bhave. तो क्लासरूम ट्रांजेक्शन हम जो बोलते हैं या पेडागोजी की बात जितनी भी 4.1 से लेके की है, 4.35 में जो असेसमेंट की बात है, सब चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, सॉरी नई तालीम में भी बहुत अच्छे से अभय जी ने नरेट किया है। तो मेरे ख्याल से मेरे और दो साथी लोग बाकी हैं, तो मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो इतना आज मौका मिला आप सब लोगों के साथ बात करने के लिए। स्पेशली मैं अभय बंग, मेरा प्रिय कैरेक्टर है, मैं उनके बारे में बार बार बात करता हूँ, आज और मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ बात करने का। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर तेज जोशी जी। और आपने तो बिल्कुल हमें एकदम गौशाला में ही ले गए आप, और हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को अनुभवों की तरफ ले जा सकते हैं और उन्हें लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने को प्रेरित कर सकते हैं। और इससे यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं कि आप केवल मैथमेटिक्स पढ़ाएं या केवल लैंग्वेज पढ़ाएं। आप एक ही प्रश्न के माध्यम से और एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आप तमाम सब्जेक्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं। जो शिक्षक हमारे बार बार कहते हैं कि सिलेबस कैसे पूरा होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, और टाइम टेबल भी तो बहुत जो है लिमिटेशन है। तो अगर हम सारे सब्जेक्ट्स को मिलकर टीम टीचिंग अप्रोच में अगर पढ़ाते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कि नई तालीम का भी पर्सपेक्टिव है, तो शायद हमें ना तो सिलेबस की बाध्यता होगी, ना तो टाइम टेबल की बाध्यता होगी, और केवल बाध्यता यही होगी कि बच्चे सीखें और हैप्पीली सीखें और जॉयफुली सीखें। बस यही हमारी बाध्यता होगी, यही हमारा पैशन होगा, और ये हमारे लिए जो है वो बच्चों को आगे होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाने का बहुत अच्छा जो है माध्यम बनेगा। थैंक यू जोशी जी। नाउ जोशी जी ने पहले कहा कि उनकी एक पूरी टीम है, तो अब हम इनवाइट करते हैं मिस्टर पार्थेश पांड्या जी को, जो कि पार्थेश पांड्या जी से पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट राकेश जी, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पार्थेश जी को कैसी बातें बोलते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राकेश पांड्या जी, जो कि हेड टीचर है एट असर में प्राथमिक पाठशाला में गुजरात की पाठशाला के नाम से बहुत जाना जाता है। ये बहुत से आर्टिकल्स लिखते हैं और उनका एक ब्लॉग भी है, और इनकी जितनी भी तस्वीरें अगर आप देखिएगा तो बच्चों के साथ ही इनकी तस्वीरें हैं ज्यादातर, और ये बहुत इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ
एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो है सेशंस देना, उन्हें सिखाना. तो now I would like to invite Rakesh ji to share his experiences with us. धन्यवाद मैम, मैं अपनी बात शुरू ही कर देता हूँ. देखिए, हमारे पास आज स्कूल में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सीखते नहीं है, करिकुलम खत्म नहीं हो रहा है. आप बोल रहे हैं इस तरह से पढ़ाइए, हम इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे. अब ये तो ये बात हो गई कि मुझे पहले तैरना आ जाए फिर मैं पानी में जाऊंगा, उसके पहले मैं पानी में नहीं जाऊंगा, डूब जाऊंगा तो क्या करेगा, गारंटी क्या है. अब शर्त यही है कि अगर आप पानी में जाएंगे नहीं तो तैर नहीं पाएंगे. तो ये प्रॉब्लम है, एक शिक्षक के लिए बड़ी समस्या होती है कि बच्चे सीखते नहीं है. तो उसका भी इलाज नई तालीम में है. कुछ बातें यहाँ पर भी मिली, तो मैं ये इस प्रॉब्लम को इस तरह से जोड़ूंगा कि अगर हम अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाते हैं तो बच्चों के साथ क्या होता है. आज विश्व की भी एक समस्या है कि संवेदनशीलता कम हो रही है. गांधी का बहुत ही एक फेमस कोट भी है कि जब मैं किसी मनुष्य को संवेदनहीन होता हुआ देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है. और हमने उनके जीवन में ये देखा भी है. तो इस तरह से पढ़ाने का मतलब कि आप कुछ काम हाथ से करवाते हैं, मिट्टी के साथ काम करते हैं, पानी के साथ काम करते हैं, और भी लोगों के साथ जुड़कर काम करते हैं. सिर्फ किताब खोलकर पढ़ने नहीं बैठ जाते हैं, कॉपी में लिखते ही नहीं रहते हैं. आप चार दीवारी के बाहर जाते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, हाथ और पैर का इस्तेमाल करना पड़ता है. और इसके साथ साथ आपको लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है. आप उससे अच्छे से व्यवहार करे ना करे तो आप दुनिया से कनेक्टेड होते हैं. सिर्फ आज की तरह हम जिस तरह से पैंडेमिक का हमने एक्सपीरियंस किया है और हमने देखा कि क्या हालत हो जाती है हमारी. आप लोगों से जब मिलते हैं तो उसके हिसाब से आपको समूह में जीने के तरीके भी सीखने पड़ते हैं. तो ये जो है वो नई तालीम और न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों में से निकल कर आने वाली बात है कि आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा. ये अब चॉइस नहीं रहा है. हमारे इतने सारे जो प्रॉब्लम्स खड़े हो चुके हैं तो ये चॉइस नहीं है. अब एक पाठशाला कैसे ये काम कर सकती है, मैं पहले 3 बातें बोल देता हूं, फिर मैं मेरे जो कुछ पिक्चर्स है वो भी मैं दिखा कर उसके साथ उसके बाद करूंगा. तो एक काम, हाथ और पैर से काम करने वाले काम आप पाठशाला में डाल दीजिए. बागकाम डाल दीजिए, कुछ छोटी मोटी जो नाप लेने हैं, मैदान बनाने हैं, वो काम डाल दीजिए. आपने कुछ छोटा सा किचन गार्डन बना के रखा है, उसकी देखभाल डाल दीजिए. कोई हर्बल गार्डन छोटे सा बना दीजिए. आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं. अब टीचर्स को लगता है कि यार इतना सारा मटेरियल मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, और ये सारे जो अगर ये मटेरियल बनाने में बच्चों का हाथ लग गया और कुछ इधर का उधर हो गया तो फिर तो पूरा TLM अच्छे से नहीं बनेगा. आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो बच्चों के लिए बन रहा है. ये जो पाठशाला है वो बच्चों के लिए है. तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले. कुछ टीचर्स हम मिलते हैं तो बात करते हैं, बच्चों के हमने आजादी दी है. मैं पूछता हूं आजादी दी है का मतलब क्या है. उनके पास है ही है, आप देने वाले होते कौन है. तो ये पर्सपेक्टिव भी बदलना पड़ेगा. तो होता क्या है कि वो आपके साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है. एकाग्रता से काम करना पड़ेगा. आपको किसी भी जगह के आप स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो आपका जो ध्यान है उसी चीज पे लगा रहता है. क्या वो सारी बातें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम नहीं आएगी? आएगी ही आएगी. दूसरा, हम जब गांव में जाते हैं, अब मैं किसी जगह से MA BEd वगैरह सारी पूरी डिग्रियां ली है, मैं अध्यापक के तौर पर उस छोटे से गांव में जाता हूं और मैं देखता हूं कि अरे यार यहाँ तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, सिर्फ मैं ही मैं हूं. तो गांधी के पास उसके जवाब थे, क्योंकि वो छोटे से छोटे आदमी से भी बात करते थे, उससे भी सीखते थे. और हमें भी आज जो भी ज्ञान है वो हमारे जहां पर मैं हूं, जहां से मेरे बच्चे स्कूल में आते हैं, उन सबको मेरे साथ जोड़ना पड़ेगा. हमको तय करना पड़ेगा कि किसका ज्ञान है. जैसे उदाहरण के तौर पर
कोई पशुपालक है जो भेड़ बकरियां सब रखता है और उसको प्राणियों के बारे में मुझसे ज्यादा ही जानकारी है, क्योंकि मेरी जानकारी तो किसी किताब से निकल कर आई है, एनवायरमेंट साइंस का किताब हो या फिर कुछ ज्यादा मैंने पढ़ भी लिया है, तो भी वो वहीं से निकल कर आई हुई जानकारी है। लेकिन जो निरक्षर है, सिर्फ उसको पढ़ना और लिखना नहीं आता, वो अच्छे से कह पाता है कि ये बकरी है, इसको क्या 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 बीमारी है, उसकी दवाइयां क्या क्या है। तो आपको उसको भी पाठशाला में लाना पड़ेगा या फिर आपकी पाठशाला वहां पर लगानी पड़ेगी। और तीसरी बात है डेमोक्रेसी ऑफ डिस्कशन। हम लोकशाही बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर चर्चा, हर एक बात में डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कोर्स लगातार होना चाहिए। मैंने ये बोल दिया हो जाना चाहिए, नहीं चलेगा। चाइल्ड सेंटर्ड अगर स्कूल डेवलप करना है तो पूरी सिस्टम को इस तरह से करना पड़ेगा कि अगर बच्चे को भी बोलना है, अच्छा फिर देखिए बच्चों की हर एक जिद पूरी करना, मैंने ऐसा नहीं बोला, गांधी ने भी ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने भी सिखाया था कि हर एक बात की जो फ्रीडम है उसके साथ साथ ऐसा क्यों करना है, तो उसके बहुत सारे डिस्कोर्स होने चाहिए। कुछ पिक्चर्स के साथ बात करते हैं इस तीन चीजों को। अगर और ओके, यू हैव टू ऑप्टिमाइज, I cannot share. Okay, now I can. Yeah. So this is a picture of the school only. और एक छोटे से गांव का स्कूल का भी पिक्चर है। और या अब जो गांव है उसमें ज्यादातर लोग, करीबन 30% लोग जो है वो भेड़ बकरियां रखते हैं। और वो जो ऊन निकाल कर लाते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, कितना श्रम लगता है। हमने सिर्फ स्वेटर पहना है और फिर जब स्वेटर पहना है तब वो उनकी जो जितनी भी उपयोगिता है वो सब याद आती है कि अच्छा अच्छा ऐसा। फिर जब एसी कार में कहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में अगर ये भेड़ बकरिया वाला मिल जाता है तो हम एसी कार में गर्म हो जाते हैं। अब क्यों गर्म हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि जिस विंटर में वो मैं स्वेटर पहनता हूं वो ऐसे किसी आदमी की रोजमर्रा की इतनी मशक्कत के बाद मेरे पास आया है। तो ये बच्चे इसी उम्र में जान ले, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कुछ नापना है, आप ईंट है वो क्लासरूम के अंदर आ भी सकती है और आपके बच्चे क्लासरूम वहां लगा भी सकते हैं। जैसे कि हमने टेलीस्कोप के बारे में बता दिया, पेरिस्कोप के बारे में बता दिया, बच्चों को बोल देते हैं सिर्फ, अच्छा ऐसा हमारी स्कूल में लगाना है तो हम कैसे लगाएं, उसका प्लान बनाओ और लगाओ। जैसे हमने गणित को पढ़ाया, फिर होता क्या है कि जो उसका गांव है, देखिए एक नई तालीम और एक रास्ता खोलती है कि जो पेरेंट्स है उसका स्कूल के प्रति विश्वास बढ़ता है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आपने जोड़ना पढ़ा दिया, घटाना पढ़ा दिया और सब पढ़ाते पढ़ाते गणित बहुत बहुत अच्छा पढ़ा दिया, आप मार्क भी दे रहे हैं कि जैसे हमारी तरफ से जा रहा है, इस तरफ से हमारी तरफ से उनकी तरफ से है नहीं ऊपर। राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश जी, Ma'am, there is some network problem at his end, ma'am. हाँ राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है।
मैडम कवरेज की प्रॉब्लम होगी तब तक ऐसे कह सकते हैं पार्थिश भाई शुरू करें। हाँ ठीक है। कवरेज पार्थिश हम जी, उनको फोन से बात करते रहे, बाद में जुड़ जाएंगे। पार्थिश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? पार्थिश जी जुड़े हुए हैं? अभी तक तो थे। मेरी आवाज सुनाई स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी पार्थिश जी, हम आपको इनवाइट करने जा रहे हैं। शायद राकेश मैं जी तैयार नहीं कर रहे हैं जी। मैं तैयार हूँ। ठीक है। So due to some technical problems, राकेश जी के एंड नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो राकेश जी का हम बाद में पूरा कर देंगे प्रेजेंटेशन। अभी हम ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर पार्थिश पांड्या जी, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ITOWE डेवलपमेंट फाउंडेशन, गांधीनगर, गुजरात में। ये एक स्मॉल विलेज में रहते हैं, रहना पसंद भी करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के साथ करते रहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। और बहुत ही फ्लेक्सिबल पेडागोजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चों को एनर्जाइज करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि लेट अस गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, और ये जाने की कोशिश भी करते हैं इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करके, इस तरीके की एक्टिविटीज करके। पार्थो जी ने 2013 में नेशनल अवार्ड फॉर नई तालीम जीता है, जिसे माँ बाबा अवार्ड फ्रॉम अखिल भारतीय नई तालीम संघ वर्धा से इन्हें मिला है। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर पार्थिश पांड्या जी। क्योंकि हमारा अब टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट नाउ माय स्पीकर्स टू बी ब्रीफ एंड simultaneously informative also जी। ओके यहाँ 1:32 मेरी घड़ी दिखा रही है, 1:40 को मैं खत्म करूंगा। ये मेरा पहले से मैं बता दूं, मतलब है कि हमारा टाइम शेड्यूलिंग होता रहे। जी जी जी। नमस्कार मैडम एंड जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको नमस्कार। राकेश भी ज्वाइन हो चुका है। गांधी जी की नई तालीम के बारे में हमने बातचीत बहुत सारी की है। मुझे 2-3 चीज वहां से लेकर आज के चीज को जोड़ना है। एक है कि भारत दुनिया में एकमात्र और पहला देश है कि जिन्होंने आश्रम परंपरा से शिक्षा की बात की है। एंड जब आश्रम परंपरा से शिक्षा की बात करने की जब हम बात करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि जिसमें सबसे पहली बार एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं। वहां कोई ऋषि मुनि के पास आता है बच्चा और पूछता है कि मुझे पशुपालन सीखना है, तो ऋषि उनको एक गाय देता है और बोलता है कि जब तेरे पास 100 गाय हो जाए तब वापिस आने का। और जब वो 100 गाय लेकर वापस आता है तब गुरुजी पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या सीखना है। बच्चा बोलता है मुझे कुछ नहीं सीखना है। अब ये पूरी घटना को मैं अगर आराम से देखूं तो मुझे पता चलता है कि जो शिक्षक का रोल जो है वो फैसिलिटेटर का कैसे है और वो गुरुजी ने क्या किया। शायद ये सारी कहानी है वो केवल कहानी ही है, लेकिन जिन्होंने भी कहानी लिखी है उन्होंने तो कुछ सोचा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये सोच जो है वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी भेंट है। तो मैं एक पहली बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, गांधी जी ने जब उसी चीज को लेकर आगे ले जाकर जब प्रयोग किया है, हालांकि 1938 में उन्होंने नई तालीम की बात की, लेकिन 1902 से वो फिनिक्स आश्रम एंड देन टोल्स्टॉय फार्म के अंदर वो एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट का निचोड़ जो उन्होंने दिया है वो 38 में नई तालीम मिली है। तो एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग के अंदर हमें अगर सीखना है, बात करनी है तो 2002 से जाना चाहिए, वो एक बात है। तीसरी बात जो मुझे कहनी है कि उन्होंने जो कहा है वो एक बात है, मैं एक थोड़ा डेविएट होकर एक जिक्र करूंगा। उनका जो पुस्तक है उसका नाम, जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के प्रयोग। मतलब मुझे जो सही लगता है, जो मैं प्रयोग करता हूं उसी को मैं सत्य कहता हूं। मतलब कि गांधी जी ने ऐसा कहा था इसलिए मैं कर रहा हूं, ऐसा कोई सोच रहा है तो वो खुद गांधी के खिलाफ है। क्योंकि गांधी कभी ऐसा नहीं कहा था मैं कहूं ऐसा करो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देखो और फिर आपको जो लगता है वो करिए। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो उनके एक जीवन का भी एक भाग है। ये 3 बात का बेस बनाएंगे तब जाके मुझे नई तालीम समझ में आएगी। अब मैं आज के दिन की बात करूं तो हमारी जो एनईपी है जो हमको कह रही है उसको हम थोड़ा समझें और उसके बाद करेंगे तो पता चलेगा। हमने उसमें 6 से 8 के अंदर 10 दिन का
बैगलेस एजुकेशन की बात की है। क्या हम उसको ऐसे देख सकते हैं कक्षा 6 सुबह से शाम तक उसको एक एक्सपोजर मिले, ऐसे 10 दिन हो? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, हम अपने गांव के अंदर हम स्वयं पाक करते हैं। स्वयं पाक कब करते हैं? भादों के महीने में। वहां की लोकल ट्रेडिशन है। उस लोकल ट्रेडिशन के अंदर हम लोग वहां के जो दूध उत्पादक हैं वो दूध है डेयरी में जमा नहीं करवाते हैं, ये उनका लोकल मानना है। वो आपस में कहीं बांट सकते हैं। तो गांव में अगर 100 लीटर दूध मिलता है तो वो हम स्कूल में लेकर आते हैं, बच्चे उसमें से ही खीर या दूध पाक बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, और पूरे साल भर जिन्होंने हमको मदद की है उसको हम खाना खिलाते हैं। अब मैं उसको एक छोटा सा एक्सपीरियंस देख रहा हूं, तो उसमें क्या है? उसमें मैं इतना देख रहा हूं, मेरे आसपास जो हो रहा है उसको मैं स्कूल से जोड़ रहा हूं। तो मेरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, उसके साथ मैथ्स जोड़ सकता हूं। जो नदी सर से राकेश ने बातचीत की, अभय बंग जी ने बातचीत की है, तो वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा क्या हम उसका एक है, अगर क्रॉस कटिंग देखा जाए तो इतना है, मेरे आसपास जो हो रहा है उसको मैं स्कूल से जोड़ सकूं। अगर 7वीं कक्षा में आ रहा है तो हम बच्चे को कम से कम एक नाइट कहीं रह पाए, ऐसे कहीं ले जाएं। गांधी जी की जो नई तालीम कह रही है कि उसमें सह शिक्षा, मतलब लड़के लड़की साथ रहकर पढ़े। आज हम सबसे ज्यादा वहां से मुश्किल लगता है कि हम, क्योंकि वो चीज गांधी के बारे में उन्होंने कहा था, हम 2 ही चीज कर सकते हैं, यहाँ लड़की और लड़के को अलग कर दे, प्रश्न ही ना आए। दूसरा है कि दोनों को साथ रखकर बैठे तो पता चले कि ये प्रश्न नहीं है, ये एक्चुअली साथ रहने का एक शिक्षा है। तो शिक्षा देखना है या प्रश्न देखना है? मुझे लगता है गांधी जी का एक बहुत बड़ा कहना है शिक्षा उसमें देखनी है। इसीलिए हम ऐसा करें, वो कैंप लगाए, वो कैंप स्कूल में ही भले लगे, हम कहीं बाहर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि ये दूसरी चीज है, 8वीं में जाएं तो 3 दिन तक जाएं, कहीं बाहर जाएं, एक्सपोजर लें और काम करें। ये सारी चीज के अंदर हम कारीगर का मेला लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्रेड 9 से 12 तक अगर हम जाते हैं तो एक वोकेशनल एजुकेशन की बात यहाँ हमारे अंदर हमारी नई शिक्षा नीति कह रही है। क्या हम गृह उद्योग, गांधी जी ने जो कहा था उसको देखेंगे तो उसमें 4 उसके अलग अलग पहलू हैं। एक गृह उद्योग ऐसा होता है जिसमें रॉ मटेरियल भी गांव में आता है और कंजम्पशन भी गांव में होता है। दूसरा है रॉ मटेरियल गांव का होता है, कंजम्पशन बाहर का होता है। तीसरा रॉ मटेरियल बाहर का होता है, कंजम्पशन गांव में होता है। और चौथा है रॉ मटेरियल भी बाहर का, कंजम्पशन भी बाहर का, लेकिन उसका प्रोसेस गांव में होती है। ये चारों किस्म का जो गृह उद्योग है, उसमें पहले वाला गृह उद्योग सबसे ज्यादा सस्टेनेबल, सबसे कम आमदनी देने वाला, और आखिरी वाला सबसे कम सस्टेनेबल, सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला। इट्स वेरी आयरोनिकल, लेकिन ऐसा होगा तो हमें उसमें एक चूज करना है कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शन होता है, हमारे यहाँ सारे बच्चे वो विज्ञान प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में वो कौशल प्रदर्शन हो सकता है? तो राष्ट्रीय कौशल प्रदर्शन, और कौशल प्रदर्शन को लेकर वहां जो बच्चों ने की गई चीजें हैं उसको वहां रखा जाए तो उसको एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। और जब मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिलेगा तब जाके वो एक शिक्षा का बहुत बड़ा आधार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये चौथी चीज मुझे कहनी है। एक और चीज है कि शिक्षा के साथ, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है, गांधी ने 38 में जब कहा था, उसके बाद जितनी भी शिक्षा नीति आई है उन्होंने ये काम करने वाला जो पोर्शन है उसको को करिकुलर ही जाना है। ये पहली बार ऐसा कह रहे हैं कि कुछ भी को करिकुलर नहीं है, एवरीथिंग इज अ मेन स्ट्रीम। तो कभी हमने ऐसा कहा था कि मेन स्ट्रीम के ऊपर का लोड कम करने के लिए हम ये वोकेशनल काम कर रहे हैं। आज हमें आंख और कान खुलकर समझ लेना चाहिए, मेन स्ट्रीम का लोड की बात ही नहीं है, क्योंकि जिसको मेन स्ट्रीम कहते हैं वो कितने लोगों को जॉब दे पाएंगे? आई थिंक इट्स हार्डली 5% गवर्नमेंट जॉब, रेस्ट ऑफ द पीपल हैज टू एब्सॉर्ब समवेयर एल्स। तो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम तो शायद ये वाला वोकेशनल है। तो मुझे लगता है इसीलिए पहली बार ये हमारी नई शिक्षा नीति कह रही है कि आत्मनिर्भर की बात कर रही है, हम ग्रेड 8 से ही उस दिशा में जाएं। तो कुछ सवाल हमें ऐसे पूछने चाहिए, अपने टीचर पूछ सकते हैं कि मेरे आसपास क्या, मैं शहर में रहता हूँ, क्या मेरे शहर में मैं बच्चे को कविता लिखना सिखा सकता हूँ, फोटोग्राफी सिखा सकता हूँ, फोटोग्राफी को लेकर मैं एग्जीबिशन कर सकता हूँ, एग्जीबिशन से फोटोग्राफ मार्केट कर सकता हूँ, बच्चे के खाते में जमा करवा सकता हूँ। 1:40 हो चुकी है, मेरे 1 मिनट और ज्यादा लूंगा। मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, क्या मैं एक सत्र बना सकता हूँ, आम सत्र, बाम्बू सत्र,
या तालाब सत्र या लेखन सत्र। मेरे क्लास में 10 दिन मेरे जो जॉब, ये जो मेरा बैगलेस एजुकेशन है, आम मतलब है एक मैंगो, तो मैंगो प्लांट से लेकर उसके बारे में बच्चे खाएं, जो देखें, खेले, सब कुछ करें, लेकिन उस पूरे पोर्शन को मैं आम सत्र ऐसा दे सकता हूँ। क्या बांबू सत्र देख सकता हूँ, क्या लेखन सत्र दे सकता हूँ, क्या फोटो सत्र देख सकता हूँ, मैं आनंद बाजार कर सकता हूँ। आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ ऑप्शन वी डिड इन आवर स्कूल। एंड मुझे लगता है कि हमारे बच्चे ने ये सब किया है। तो राकेश कह रहा था, राकेश का टाइम चुरा लिया है मैंने। राकेश को एक बता दूं, तो वो डेमोक्रेसी की बात आखिर में कह रहा है। मुझे लगता है जब सत्र की जो काम चुनते हैं तो बच्चे डिस्कस करते हैं, उसमें से नतीजा लेते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इलेक्शन आता है, तब वो बड़े लोग डिस्कस करते हैं मुझे कहाँ जाना है। अगर मैं बच्चे को सिखा रहा हूं तो उसका मतलब ये हुआ जब बड़ा होगा बच्चा, तब गांव में कोई आकर सिखा देगा कि इसको वोट देना है, हम डेमोक्रेसी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी का मतलब है बच्चे को डिस्कस करवाना और वहां से ले जाना। मुझे लगता है कि टाइम इज नॉट परमिटिंग, मेरी 1 मिनट भी खत्म हो गई है। थैंक यू, आई एम रिटर्न बैक टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू पातेश जी, आपने बहुत जल्दी बहुत सारा खजाना हमें दे दिया है और आपने हमें बता दिया है कि किस तरीके से हम बैगलेस डेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस प्रकार विज्ञान प्रदर्शनी को हम कौशल प्रदर्शनी में बदल सकते हैं। ये कुछ बहुत अच्छे सजेशन है जिन पर हम ध्यान देंगे आगे चलकर। अब अगर राकेश जी बहुत ब्रीफ में अपनी प्रेजेंटेशन को पूरी कर दें तो हम लोग इस सेशन को कंक्लूड कर सके। राकेश जी, आपका इंटरनेट परमिट कर रहा है तो जी। देखिए, हमने जो बात की थी वो उस तरह से बात की थी कि अगर उसे श्रमिक के श्रम के बारे में पता नहीं है तो वो श्रमिक को समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए छोटे छोटे काम, देखिए एक घर होता है ना, तो आपको लगेगा कि एक नल भी टपक रहा है तो उसके लिए भी आप किसी को ढूंढने चले जाते हैं, और ये ऐसे नहीं चलेगा। घर के छोटे छोटे काम भी आप स्कूल में सिखा सकते हैं, या आप मेला लगा सकते हैं, या आप अपने डेली रूटीन में लगा सकते हैं। तो जैसे कील ठोकना, हमको लगेगा क्या यार ये स्कूल का काम है। आप मान लीजिए अगर एक बार कहीं कहीं पे ऐसा लगेगा कि टीचर्स को ये क्या काम करना है, तो मैं उस सभी टीचर्स को चैलेंज करता हूं कि एक बार लगा के देखें और समझे कि ये भी कितना मुश्किल काम है। और जो पार्थेश भाई ने बता दिया है, तो मैं वही बात ज्यादातर मैं बोलता हूं कि ये सारी चीजें करनी है, मतलब आप एज ए प्रिंसिपल और एज ए सिस्टम आप उसमें नहीं डालेंगे। आपको ये सारी बातें बच्चों से निकलवानी पड़ेगी, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। जैसे आप पूरी जितनी भी गतिविधि है, फेस्टिवल्स है, वो सारे स्कूल में होते हैं, बड़े बड़े हॉल में होते हैं, नहीं करने हैं। आपका जो गांव है उसको लगना चाहिए कि आपकी पाठशाला में हो क्या रहा है। पाठशाला और गांव एक हो जाना चाहिए। जैसे नवा नदी सर ने अपना एक फेस्टिवल, नवा नदी सर का ग्रामोत्सव ऐसा तय किया है, तो गांधी चाहते थे कि जो भी है वही जगह पे पूरी चीजें वहीं से निकलकर उसी जगह पे जम जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत सारा पढ़ लिया फिर उड़ जाए। तो आपको गांव के साथ जुड़ने के लिए काम करना पड़ेगा, बच्चों के साथ बातचीत करते रहिए, उनसे ही बातें निकलवाइए कि हमारी पाठशाला में आगे और हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम एक बेहतर पाठशाला बनाने में और बेहतर राष्ट्र बनाने में कर सकते हैं। तो अंत में मैं मेरी सारी चीजों को एक बार फिर से जोड़ देता हूं, मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूं कि एक पाठशाला को पहला काम करना चाहिए कि वो पाठशाला बच्चों के लिए बनी है वो तय कर देना चाहिए, और उसके लिए टीचर्स और प्रिंसिपल्स को पहले केयर फ्री हो जाना चाहिए कि अब जो भी करना है बच्चों को करना है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे हमारी डेमोक्रेसी का जो भी स्ट्रक्चर बना है उसी तरह से आपके स्कूल के हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि जो भी आप चाहते हैं वैसा होगा, लेकिन आपको हर बार हमें जोड़ के बताना पड़ेगा कि वो क्यों करना है, कैसे करना है। इतना आप एक बार कर लेते हैं तो आपको देर से होने वाले काम डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक छोटा बच्चा जब होता है तो वो कभी आलसी नहीं होता, वो थक जाता है, सो जाता है, फिर अपना काम शुरू कर देता है। ऐसा बच्चा पाठशाला में आके इतना थका क्यों है?
वो पढ़ने में रुचि क्यों नहीं रखता है? क्योंकि उसको करने हैं हाथ पैर वाले काम, हम दे रहे हैं किताब और कॉपी। दूसरा, आपके आसपास में जितने भी स्थानिक व्यवसाय कार्य वो आपके टीचर्स हैं। चिल यार, इतने सारे टीचर्स हैं आपके गांव में ही, आपके परिप्रेक्ष्य में ही, उनको बुला लो या फिर उनके पास चले जाओ। और तीसरा काम, डिस्कोर्स, इतनी सारी डिस्कशन स्कूल में होनी चाहिए कि बच्चे समझे कि हर एक चीज की जो भी समस्या होती है उसका हल चर्चा में होता है। तो मेरे ख्याल से ये 3 बातें जो नई तालीम में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, और शिक्षक अगर चाहे तो ये कर सकता है। आई थिंक आई हैव टू एंड विद दिस कोट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल बहुत ही 3 स्टेटमेंट्स के साथ आपने जो कंक्लूड किया है, ये शायद 3 स्टेटमेंट्स हमारे पूरे सेशन के लिए जो है ये माइलस्टोन स्टेटमेंट्स हैं कि बच्चे को वही काम दीजिए जो कि वो हाथ पैर से कर सकता है, क्योंकि वो बच्चा उसी में रुचि लेता है और वो उसी तरीके से कर सकता है। और जो बच्चे, जिन बच्चों की कोई स्पेशल नीड है, जिन बच्चों की कोई अन्य आवश्यकता है, उन्हें हम उसी हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से ही काम उन्हें दें। और दूसरी बात है, टीचर आपके स्कूल में तो है ही, पर अगर हम कम्युनिटी में भी टीचर्स ले सके, क्योंकि हमारी कम्युनिटी भी शिक्षक का काम कर सकती है। और स्कूल और कम्युनिटी के बीच की दीवार को हमें तोड़ना होगा, कम्युनिटी अंदर आ सके और स्कूल बाहर जा सके, ये देखना होगा। क्योंकि स्कूल एजुकेशन तो वैसे भी जो है वो समाज से ही जो है, अगर स्कूल एजुकेशन का जो आप पर्पस देखें तो ये है कि हम समाज से, हम भौतिक वातावरण से एक संबंध बनाते हैं और उस संबंध को सस्टेन करते हैं। यही हमारी स्कूल एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है कि हमें सोसाइटी के लोगों से एक संबंध बनाना है और इसे सस्टेन करना है। हमें भौतिक एनवायरनमेंट को समझना है, हमें मशीनों की बातें समझनी है और उनसे संबंध बनाना है, उसको सस्टेन करना है। तो हमारी ये जो हमारी कैपेसिटी बिल्ड करती है एजुकेशन, और इसीलिए हमारी ये सब्जेक्ट सोशल साइंस और मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस हमें दिए जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम कम्युनिटी और स्कूल को जोड़ सके, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस कम्युनिटी में ले सके, सोसाइटी में ले सके, और उस एक्सपीरियंस का जो है फायदा उठाकर वो अपना डेवलपमेंट कर सके। और ऑफ कोर्स डिस्कोर्स की बहुत जरूरत है। ये डिस्कोर्स ये जो हम आज टीचर फेस्ट में कर रहे हैं, अगर आप देखिए तो पॉलिसी के एक जो सूक्ष्म जो भी पहलू है, उन पर भी हम बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा डिस्कोर्स है। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ SCRTs के एक्सपर्ट है, हमारे साथ जो फील्ड में काम करने वाले टीचर्स हैं जिनको राष्ट्र ने सम्मानित किया है, नेशनल अवॉर्डी टीचर्स भी हमारे साथ है। तो हमारे साथ तमाम तरह की जो है वो जो एक्सपर्ट्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और एजुकेशन जुड़े हुए हैं। और आज ये डिस्कोर्स का ही हमें लगता है ये डिस्कोर्स हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा जब हम करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएंगे, जब हम तमाम तरह की गाइडलाइंस और हैंडबुक्स बनाएंगे कि कैसे बैगलेस डे ऑर्गेनाइज कराया जाए, या किस प्रकार से हमारे सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स बने। उन राइटर्स के लिए, टेक्स्ट बुक राइटर्स के लिए जब हम गाइडलाइन देंगे तो आप सबके व्यूज, आप सबके अनुभव हमारे लिए बहुत ही काम आएंगे। और आज की नई तालीम और जो शिक्षा नीति के बीच हम लोगों ने एक समागम देखा है, जो हम लोगों ने एक संबंध देखा है, इसे भी हम लोग आगे अपने पाठ्यचर्या की रूपरेखा में लाना चाहेंगे कि किस तरीके से इसे हम सामने रखें। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने वक्ताओं को, हमारे आज के वक्ता के प्रोफेसर रजनी जोशी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे बच्चे में स्वतंत्र चिंतन का विकास हो। जोशी जी ने बहुत अच्छी तरह से एक किताब से एक एग्जाम्पल लेते हुए हमें बताया कि किस तरीके से बच्चे के अंदर हम क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जगा सकते हैं, और बड़ा पैशनेट होकर उन्होंने बताया हमें कि इस तरीके से भी हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा सकते हैं। उनकी टीम के 2 सदस्य पातेश जी और राकेश पटेल जी ने भी हमें अपने अनुभवों से ये बताया कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक ऐसी विधा है, अगर ये हमारा टीचर अपना ले तो शायद हमें हमारी बहुत सारी जो एजुकेशन से संबंधित जो हम कहते हैं कि बच्चे
अचीव नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते, ये सारे चैलेंजेस जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा जो है वो एड्रेस किए जा सकते हैं। बच्चे खुद इंटरेस्ट लेकर पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र चिंतन को जनरेट कर सकते हैं और आगे होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे हमारा जो पॉलिसी का जो विजन है कि हमें अपने भारत को एक ऐसी हाइट पर लेकर जाना है, ऐसा आत्मनिर्भर भारत बनाना है जिससे कि हमारा जो विश्व के सभी देश जो है इससे सीख सके। तो इसके साथ ही अपने वक्ताओं को पुनः धन्यवाद, और धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद विपिन जी को, धन्यवाद प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी, डायरेक्टर NCERT, thanks to Professor Anupam Ahuja, coordinator of overall coordinator of this Teachers Fest. Thanks to very respected Secretary, Madam School Education and Literacy, Mrs. Anita Karwal ji, or my heartiest thanks to other officials of Ministry of Education, and also NCERT faculty members and technical team at this CIT. They are really helping us a lot, and of course technical teams for entire जो हमारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो NIC टीम, चाहे MyGov.in के जो टेक्निकल टीम्स हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए। और धन्यवाद आप सबको जो बहुत ही धैर्य से इस सेशन को देख रहे थे, सुन रहे थे, और लगातार आपने फीडबैक आपने YouTube पर दे रहे थे और दूसरे चैनल्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी दे रहे थे। तो सबको बहुत धन्यवाद। हम सब जो है आज की यहाँ की जो लर्निंग है, यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, जो यहाँ से हमने सीखा है, उसे आगे न केवल अपने करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में लाने की कोशिश करेंगे, बल्कि अपने ट्रांजैक्शन मोडालिटीज में भी, जैसे हम टीचिंग लर्निंग करते हैं, उसमें भी लाने की कोशिश करेंगे और मूल्यांकन को भी उसी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही आप सब